I think back end of the tournament, it's more about keeping them relaxed. Go there, don't worry about the results. Just go there और अपने आप पे बिलीव रखो और जो आप करते आ रहे हैं, जो आपको आता है, वो फ्री माइंड के साथ जाके आप अपने आप को एक्सप्रेस करो. Outcome perspective is very simple to provide players for Pakistan cricket and to groom them, give them the awareness what they are going to go through international level. Overall, I think competitive cricket है. थोड़ा सा ये भी अच्छा है कि फर्स्ट टाइम T20 क्रिकेट में यहाँ पे हमें चैलेंजिंग कंडीशंस भी नज़र आए और उसको कैसे टैकल करना है, उसके उन कंडीशंस में कैसे आपने रन्स बनाने हैं. मैं तो सबको ही टारगेट करूँगा. मैं तो किसी को कोशिश करूँगा कि जो मेरी बेसिक्स हैं उसमें रहूँ और जो बेसिक्स पे रहते हुए ही इंशाल्लाह अपने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे. Consider this final as another game, and because that way you don't add additional pressure. टूर्नामेंट हम लोग का एज ए स्टैलियंस हमारी टीम का बहुत अच्छा गया जिस तरह से हमने क्रिकेट खेली है और मेरा ख्याल है सब ने एंजॉय किया और इस टूर्नामेंट से जो हम लोग लेना चाह रहे थे चीज़ें फ्यूचर के लिए मेरा ख्याल है एज ए टीम हमने वो अचीव किया कि हम फाइनल्स में आए और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद हो कि हम फाइनल भी जीते. बिग स्टेज, बिग फाइनल, इंशाल्लाह UMT Markhors जीतेगी. It's the big one, the grand final, Barrier Town Champions Cup T20. Form teams, Allied Bank Stallions and UMT. He led that chase brilliantly and he took his time initially, but he understood what his role was. He took the responsibilities on.
and later accelerated along with Samad. And that partnership put New Purloins out of the equation pretty quickly. But just the calculated risk and maturity he has, and obviously the skill, it's a must important thing for the team to keep eye on it. Well, the square has provided us with some brilliant games. Let's see what this particular surface will do. Shah Faisal is out there with Salman Butt. It's the day for the big final, and the conditions at Pindi Cricket Stadium are absolutely gorgeous. Talk about the weather. It's 18 degrees at the moment. It's quite breezy as well. Perfect conditions for a game of cricket. This tournament has provided us plenty of entertainment. Before going to the pitch, if we talk about dimensions, they've been pretty standard throughout the tournament. 66 meters all around. But more importantly, if you look at the pitch today, it has a slightly drier look about it. I'll bring in Salman Butt with me. Salman, having a first look, what do you make of it? Well, it certainly looks slightly different. It has been worked upon, definitely. They have watered it a bit, rolled it well just to hide that popping up grass is seen no more. And that's why I think those two big fans were here to dry it out and make sure it becomes easier for the batters and there's minimized lateral movement and movement in the air or off the pitch. 7 games at this time of the day, 3:30 start, and the team that have batted second have won 4. Is that significant enough? I think it's a 60-40 thing, but teams have changed while doing that, producing these results. So I think it's the strength of the team and how they play on the particular day. Remember, talk about batting conditions. Generally, finals have good batting conditions, but the pressure of the game at times can have a low-scoring game as well. So it's not always got to do everything with this trip. Yeah, that's absolutely perfect. It's not just about the pitch, how the players execute and plan their skills on the big final in the pressure situation. That'll be also important to see. Let's hope for a grand finale. The stage is set for the grand finale and the captains look to have this beautiful trophy and we're all set for the toss. I have the two captains alongside me, Iftikhar Ahmed for UMT Markhors, Mohammad Haris for Allied Bank Stallions, as sharp as ever. It's our match referee, Alisa, are with us, and Iftikhar is gonna give it a spin. Tails is the call. Tails it is. क्या करेंगे? बैटिंग क्या वजह लग रही है अभी तक जितनी भी टीम्स ने बॉलिंग की है आज बैटिंग की वजह? बैटिंग का यही वजह है कि बिग मैच है, प्रेशर मैच है, तो इसलिए चेजिंग का फिर प्रेशर रहता है, तो इसलिए पहले बैटिंग करेंगे जो हमारी स्ट्रेंथ है, तो उसकी वजह से। बड़ी टीम है, कैसे प्लान करते हैं ऐसी टीम्स के खिलाफ? बड़ी टीम तो है, लेकिन जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। बिल्कुल प्लान करके आए हैं और उसको एग्जीक्यूट करना है। आपने देखा कि आपके 2-3 प्लेयर्स आ गए हैं टीम में, तो टीम में क्या चेंजेस की गई हैं? जी 3 चेंजेस है। हारिस रऊफ आया है जमान की जगह, अबरार आया है तैमूर की जगह, और तैयब ताहिर आया है मोहसिन की जगह। और सर्विस को देखते हुए कितना स्कोर आइडियल होगा? कोशिश करेंगे मैक्सिमम करें, क्योंकि आज बहुत अच्छा लग रहा है, तो कोशिश करेंगे एनीथिंग अराउंड 180। ऑल द बेस्ट मोहम्मद हारिस। थैंक यू। राइट इफ्तिखार, बॉलिंग फर्स्ट, आप चेज अच्छा करते हैं तो शायद आपके हक में जा सकता है।
बिल्कुल देखो टॉस किसी के हाथ में नहीं होता मगर जो आप अच्छी पोजीशन में अच्छी क्रिकेट खेलोगे तो मेरे ख्याल में वो आपके कंट्रोल में है तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी मतलब क्रिकेट खेलें। सरफेस कैसा लग रहा है आपको कंडीशंस? हाँ सरफेस तो बहुत ज़बरदस्त है और ये है कि दोनों के लिए सूट करेगा, बॉलिंग के लिए भी और बैटिंग के लिए भी। जो अच्छा खेलेगा वही मैच जीतेगा। क्या मैसेज है आज टीम को? आज आखिरी दिन है, करो या मरो। बिल्कुल लास्ट दिन है और जितना आप में पोटेंशियल है मेरे ख्याल में और जितना आप में टैलेंट है वो इसी मैच में आप मेरे ख्याल में यूटिलाइज करना चाहिए। और टीम चेंजेस? नहीं सेम टीम है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। Right, breaking the news from the center is that Allied Bank Stallions have won the toss and decided to bat first. That's more like it, Ali Yunus. But yes, win the toss and bat first. Allied Bank Stallions have done that. Pakistan flag flying in the crowd. People are pouring in. And we expect to see a big crowd today. It's a very, very pleasant here in Rawalpindi at the moment. Well, it's all set in the ground for the national anthems. Is done. What do you make of this final? Who do you think on paper is edging this? Oh, that's a hard question. When you look at the paper and the lineups, it's a pretty even contest. But I think obviously Allied Bank Stallion with three big names coming in, Tayyab, Tahir, Haris Rauf and Abrar, that adds a bit of more balance to the side in terms of the batting because they did struggle in the middle overs. The Tayyab Tahir there,
That can give a bit of a cushion to that middle order. And Haris and Ibrar on these tracks can be deadly. But when you look at the other side, it's also an even contest. They've got a good middle batting order as well as good paces. Maaz Sadakat has been very impressive in this tournament. Average of 32, a strike rate of 135. Just 19 years of age. He's really making some statements in this tournament. Yasir Khan has had a stop-start tournament. Still the experience of 36 games. The average of 24, he's better than that. Strike rate still very healthy at 134. Yeah, fielding will be crucial in this all-important final. An experienced bowler, Mohammad Nawaz, will take up the new ball. They're taking pace off straight away. They will have to work a little harder. Maaz Sadakat has been in a sublime form. Got some runs against his name. This power play will be important for both teams, and how they can manage to get momentum in their favor. Rashid Riaz officiating at the far end, at the pavilion end, is waiting for the clock, and all in readiness. Play will be the call very shortly, and you will hear it. Making sure everything is ready. This is going to be a good contest, although if you talk about matchups, a left arm spinner to a left-handed batter. But the thing is, Maaz hitting onto the onside will be against the wind. So that's still a very calculated and good move from Iftikhar. Now Maaz Sadakat goes straight and downtown. First blow. This is some start for Allied Bank Stallions. I don't think he's thinking about the wind. Go straight. First ball in his zone. Wasn't a bad delivery, but have a look at that. He was well settled in, good pace. Coming down the track, getting closer to the pitch of delivery. That's one way to start the final. That is some confidence for you. Generally, finals are nervy affairs to begin with. Players and teams take their time to settle in. Maaz Sadakat, what are you talking about? He says. Slight change in field. This is short, whipped. May just come back for the second. Now decides against it. What a start, Marina. What about that confidence? Yeah, I think Maaz throughout this tournament has shown his skill, has shown he can build innings, he can be destructive at times, can go on a back foot as well. Has steered his team, especially in that power play, brilliantly. And why not? If it's in your zone, it's T20 cricket, it's modern day cricket, go for it. Very strong offside field. Four fielders in the ring on the offside. Mid-off is back. Mid-on is in. Invitation to go slightly against spin for Yasir. Nawaz on a length. Nawaz is very experienced. Obviously, he has a lot of experience of bowling in the power play. Has done it for Quetta Gladiators for quite so many years, particularly when PSL was being played in the UAE. He was mighty effective. With the angle picked up beautifully. What a start for Yasir as well, matching Maaz for the initial 6. And Allied Bank Stallions has got out of the blocks rapidly. Yeah, just straying down the leg. Mohammad Nawaz on that occasion, it was easy pickings for Yasir. All he had to do was pick the length, put the knee down, and got a great connection done effortlessly. Well, going with the spin in the first over hasn't worked for UMT Markhors. You'd say the first ball wasn't a bad ball, it was just a good shot by Maaz. But that really was asking for trouble. No sweeper back behind square on the onside. It's literally a free hit with that kind of angle and pace. Better, but Yasir will feel confident that he's
finding the middle of the bat. Come on, Admi. Yasir Khan, he's much more than these numbers on the screen. Got immense potential. Couldn't really convert the starts into a bigger innings. Need one today. Smashing blow. That has gone way back into the second tier. What a strike from Yasir to close out the first over. And what a start. 19 for none. Well, what a sensational start this is for Allied Bank Stallions. That last blow, it just made such a sweet sound. Really came out of the sweet spot. It's very, very expensive from Nawaz. They have a reliable and very, very trustworthy Nawaz going for 19. Yeah, UMT Markhors, and they have a tendency not to put trust in their pacers up front with the new ball. We've seen Iftikhar and Nawaz, this was the first one, oozing with confidence. Mars coming down the track, a bad delivery on the pads, was picked up nicely by Yasir, but this one, wow, aggressive footwork and a big swing of the bat. It sailed away. You don't often you see that the ball being replaced after the first over. It took a severe beating. It landed in the concrete a couple of times. Umpire Zulfikar Jan came out with box of balls. Probably it helped if they replaced. I'm not sure if they did actually, but they would have replaced it with a brand new one because it's very hard to find a one overall ball. Well, if you look at UMT Markhors' bowling planning, they have tried either Nawaz or Iftikhar in the power play, and I think that's one area where Allied Bank Stallions have thought, okay, this is an opportunity, we can attack them straight away, because their pacers, now Nisar has got the ball, the pacers haven't really delivered in terms of getting wickets with the new ball. So I think that's the plan. They knew that either Iftikhar or Nawaz will be coming, bowling within the power play, and that's our license to go, and they've done that. Nisar has had a good tournament. You'd really have to bounce back for his skipper after that start. Slip in place. Third is up in the ring already. His backward point deep on the boundary. That is a good start. It really jacked back in to Mars of a good length. Yeah, Nisar likes to hit that hard length around 4-5 meters, skids on. We've got two very experienced umpires out in the middle. Asif Yaqub got immense experience on his hand. And his counterpart, quite animated already, Rashid Riaz. Yasir will also be oozing of confidence. Those 2 sixes really, especially the last one, I really like that one as a batter as well. Probably Yasir would have too. How can he react and come back to the moment? That's the challenge. It kept low. Was it a slow delivery? I didn't really figure out, but it's unusual on this Pindi pitch to see balls dying down like that. Yeah, Nisar, he did hit that deck hard. And you can see the surprise by Yasir. Just a wild swing, you don't want to do that. Now he would be more careful in picking that shorter length because it has stayed down.
Something in the mind about this previous delivery. That's why he was more circumspect. That one bounced normally, like we've seen on this Pindi pitch. It's a great strength of Nisar though. And he hits the seam with the new ball and hits that back of a length. Generally very consistent around that fourth off stump line. Yeah, that has been his strength. Mentors, Shoaib Malik. He was on the winning side with the women's one-day tournament. Another opportunity today. Definitely another opportunity to get his hands on some silverware. Went right across the line, Yasir. Didn't get much of it. In fact, didn't get any. A leg by. The best thing to counter this sort of double bounce is to make sure you connect the ball, extend your arms and keep your weight slightly forward. In that way you can have that cushion to adjust whether it's bouncing or not. Crowds are still coming in. Like I said earlier, today's quite pleasant. A couple of nights ago it was freezing cold even at this time of the day. Today is much better, nice and sunny. It's gone over the top. What batting is this? What sensational hitting from Maaz Sadakat. He's in a whole different mood for this final. Maaz from ball one knew exactly what he has to do and what he wanted to do. Iftikhar is not happy with the line of attack. Bit of a flamingo shot from there. Maaz through the line, covered it beautifully, and a whole swing of the bat. The good thing is he's going straight. Talk about line and also the length. It was right in the slot. Maaz is in the mood today. Change of angles from Nisar. Look to cramp him now, but no change in field. What line is he going to bowl? Nicely played. Just a knockdown there from Akif. Just a single. The idea was right from Maaz because third was up in the ring. He was looking for that boundary. Not to be. Good over from Nisar. Other than that, 6, 2 done. Allied Bank Stallions, 28 for none. Well, quite a strong breeze today, but the direction of the breeze is changed. So it's not as freezing as it was the other day. That was coming from the north. Akif Javed gradually got into better rhythm and form, coming back from an injury. 13 wickets, not a bad return. I was going to say he's the quickest of the lot in this Markhors unit. The first delivery just died down. Was it a change of pace? It's slightly holding within the surface. Even with Nisar we saw that. And he has a tendency to hit fractionally short of a length. You have to be very careful because Maaz and Yasir both will go explosive off the back foot. Maaz Sadakat has been consistent throughout the tournament. Got 182 again against Markhors. Would like to repeat it today. That is Akif's natural length, back of a length. This one just left Maaz Sadakat and also bounced. But that kind of length is a good length on this pitch, as long as your line is good. Because yeah, you called it out correctly. As long as the line is correct, because Yasir and Maaz both are quite comfortable playing off the back foot, but that line never allowed him to open the arms. So Akif needs to focus on the line.
Coming right across, he's gone straight up. That will be curtains. Nawaz, the man who was taken to cleaners, has the last laugh. And Mas Sadaqat's final with the bat has come to an end. The thing we were talking about, shorter length, but the line is important. Mars on that occasion just going towards the off stump and trying to cover the line and play it into the leg side. But look, he was cramped for room, hurried onto him, couldn't really extend the arms. And Nawaz is furious. He's a happy guy, Akif. Yeah, that show of anger from Nawaz sees the back of Mas Sadaqat for 15, Allied Bank Stallions 28 for 1. Well, this could be very crucial phase of the game. Skipper Muhammad Haris is in. Average of 31. Strike rate will always be up with Haris, but good to see him being so consistent in this tournament. 3 half centuries. Today is the big stage. You cannot falter on this big stage if you're the skipper of Allied Bank Stallions. Haris will be taking on a buoyant Akif Javed, who's coming off of getting rid of Mars. Just the one slip in place. Trying to cramp Haris for space. Haris loved the room and the length. He's feeling the pinch at the moment because it hit him flush on the unpadded area. He has an important role to play as a skipper. He has a batter coming one down. Mars is trying to cover the line, but didn't have the room to extend the arms for that pull shot. God, trying to force that shot. And Nawaz was happy. His teammate has done the job. Important wicket for UMT Markhors. Two right-handers in the crease will give Iftikhar a bit of a sanity in terms of settling into a field placing. Oh, that's right back. Right back. Rashid Riaz says he's got a scratch on it. It did sound a little bit of woody. We'll see when we see the replay. But another good delivery, pinging Yasir back in the crease. Yeah, Yasir, a couple of deliveries have faced some problems facing Akif. Right in front of the stumps. And the idea was he got something. But indeed it was, and a good decision under pressure. UMT Markhors are now trying to counter the start. Did Rashid Riaz just tell Yasir, don't tell me you hit it, I'm watching it, you don't need to do my job? Oh, beautifully played, nicely timed, but good solid knock from Akif with his foot, and a very successful over, bringing UMT Markhors back into the game after 3. Allied Bank Stallions 29 for 1. Allied Bank Stallions, after the whirlwind start, has been pegged back in the last over by Akif. Just the one leg by and a wicket. Now Nisar needs to do his job. Bowling in partnerships could really build pressure. Oh, Haris goes, and Haris goes over. One of his signature shots. Nisar onto his pads, and he picked it up, and for a moment everyone thought that
deep fine was in play. Just look at that, all the hands doing the talking, and I think Haris had his heart in his mouth as well. For a moment we thought that he was in the game, Akif, but it's a lower. Akif, one of the tallest men on the pitch. There you go, anxious looks from Samad and Haris. It was really not a very good delivery from Nisar. Bowling these deliveries to Haris, and even though the sweeper was there, he took him on. Haris will do that. This is gone again. Be up the splice. Will come back for the second. Haris will keep everyone busy out there. And if you're a fielding side, you got to keep your hands nice and warm. It can come any time to you. Yeah, it's just that they need to understand, Haris and Yasser, it's not always a true bounce off the surface. This one, it got big on Haris. Went for the flashy blade, luckily evades the fielder. But they will be testing now. Nisar has got vacant areas in towards the leg side. That's where Haris prefers. So they would be trying to invite him to go for the big shot. Square leg has now gone back. Fine leg is up in the ring. Where's the other sweeper? Third with a slip in. Nisar needs to stay there and then ask Haris to change something, because that first delivery angling onto the pads, he conceded a 6. But that last delivery is really the one that Nisar should be holding on to. Yeah, that was a perfect length and line within the stumps. Just finishing around middle and off. Just don't give Haris room, because he'll be looking for it. Anything fractionally short, Haris has the tendency to play that pull shot off the front foot as well. Well, it didn't take Haris long to bring out that. Just took him 4 deliveries, but change of pace from Nisar. That was clever bit of bowling. With Haris, you got to be on your toes as a bowler. I think UMT Markhors would be happy, because that's usually the shot Haris plays when he is out of sorts. When he cannot score runs with the flow, he tends to do that innovation. So UMT Markhors, they can sense that the pressure is getting to Haris. Exactly. Talk about sixes in power play. There's a lot of talk about how the opening batters or the top order batters need to come good in the power play and maximize and hit as many sixes. This has gone straight up. It will be a tough chance, a pressure catch. And it's been shelled. Akif Javed coming in, and Nisar cannot believe it. This is a huge moment. I pointed out earlier that fielding will be very crucial in this final. Animated and furious, Iftikhar, and rightly so. They could have easily got Yasser out of the equation within the power play. Forcing that shot, the pace wasn't there, ballooned up, and look at that, no communication between these two. Faizan and Akif. It was a regulation catch. Well, life has been provided to Yasser. He'll have to re-bowl that. Yeah, Iftikhar was absolutely furious. Generally, he's a very cool and calm character, but that moment really just made him angry, I guess, because there was no communication between the fielders. Yeah, whenever you're fielding in the deep, you have to make hand gestures and a loud call, mine. Whoever thinks that he's closer to the ball. What if they both call mine? That's not the way to do it, though. A single to close out over number 4. Allied Bank Stallions, 42 for 1.
बड़े फाइनल्स में जो पहली पहली चोटियां होती हैं वो दर्द इतनी आसानी से जाता नहीं है, और स्टैलियंस ने अभी तक खासा दर्द दिया है इस फाइनल में। टॉस जीता, उसके बाद पहले ही ओवर में 19 रन बनाए। यहाँ पर यासिर का भी अभी कैच गिरा। हारिस वो भी अच्छा आगाज कर चुके हैं। तो अभी तक पावर प्ले में बिलाशुबा एक ही टीम ज्यादा फिक्रमंद है, यूएमटी मार्कोर्स की। ये कैच होना चाहिए था। आमतौर पर जो स्क्वायर लेग के फील्डर हैं अब्दुल समद फैजान थे, दरअसल वो सीधा आ रहे थे गेंद के नीचे, इसीलिए खासे बरहम थे इफ्तिखार अहमद वहाँ पर अपने फास्ट बॉलर्स से। आकिब जावेद इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं और यासिर को 4 रन मिले। ये जख्मों पर नमक के मुतरादिफ अली। ये अच्छा आगाज किया है स्टालियंस ने। 46 रन बना लिए हैं, सारे बॉक्सेस को टिक किया है टॉस जीतने से लेके अटैक करने तक। तो जो कैच है वो महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि यासिर हम जानते हैं ये लंबी इनिंग खेलते हैं और उनका कैच ड्रॉप करना बिल्कुल महंगा हो सकता है। एक जल्दी सी नजर आई है यूएमटी मार्कोर्स के कैंप में, हमने देखा थोड़े कप्तान भी गुस्से में नजर आए, फखर जमान भी थोड़ा गुस्से में नजर आए। बड़े मैच में आपको थोड़ा कूल एंड काम रहना पड़ता है। ठीक है, आगाज अच्छा हो गया एलाइड बैंक स्टैलियंस की जानिब से, लेकिन आप रिकवरी में आप ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते हैं। बहुत मैच पड़ा है, अभी काफ़ी दूसरी इनिंग पड़ी है, थोड़ा रिलैक्स रखना होगा। एलाइड बैंक स्टैलियंस की जो बैटिंग लाइनअप है, इस बार आगे गेंद गिरी और इसे चलता कर दिया। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, ताकत, टाइमिंग हारिस ने दिखाई और साथ साथ अपनी चाबुक दस्ती भी। जी हाँ, और टेक्निक भी, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को सेटअप किया, बहुत पहले तैयार हो गए थे। आप उनके स्टांस से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरफ शॉट ढूंढ रहे हैं। देखिए पहले ही ऑफ स्टंप पे उनका पिछला पांव था और फ्रंट लेग उन्होंने पहले ही क्लियर रख रखी थी। तो अगर आप इस जोन में करेंगे तो ये एंगल उनका क्लियर हो गया, और जैसे आपने कहा कि जोर तो है ही है, एरिया भी सही चूज किया और रिजल्ट भी उनके हक में आया। बेहतरीन शॉट। इस इलाके को इन्हीं स्ट्रोक्स के जरिए हैदर अली टारगेट करते रहे। हारिस जो हैं ये और भी ज्यादा आसानी के साथ खतरा बन सकते हैं इस तरह के स्ट्रोक्स पर, इसलिए इनके सामने जो गलती की गुंजाइश है वो ना होने के बराबर रह जाती है इनके पैड्स के इर्द गिर्द। क्या फेवरेट एरिया है, और इस बार तो बदले बदले नजर आए हैं। बहुत समझदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग की है हारिस ने। एक कप्तानों वाली इनिंग ऑलमोस्ट सारे ही मैचों में इन्होंने खेली है, और ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था थोड़ा ज़रा रैश जल्दी कर जाते थे, लेकिन यहाँ पे समझदारी के साथ खेले। पिक करना चाहते थे लेकिन गेंद ज्यादा उछल गई, सीधी आकर रान पर लगी हारिस के। महंगा ओवर रहा 11 रन के साथ 53 पर 1। मां सदाकत का कैच लिया नवाज ने आकिफ की गेंद पर, लेकिन अभी तक जितने भी बल्लेबाज खेले हैं इस टॉप ऑर्डर में, ये तीनों ने ताजियाने लगाए अच्छे खासे यूएमटी मार्कोर्स को। पावर प्ले का 1 ओवर आना बाकी है। मैदान में रौनक बढ़ी हुई है फाइनल के एतबार से।
उम्दा शॉट खेला निहायत दिलकश अंदाज में, रिस्ट पर काबिल दीद था यासिर का और प्लेसमेंट सही तर। जहाँ बहुत ही कमाल का शॉट है ये, जैसे आपने कहा रिस्ट, बहुत ही तगड़े रिस्ट हैं और इनका कैच छोड़ना बहुत महंगा साबित हो सकता है और ये ऐसे शॉट्स आपको दिखाते रहेंगे। बहुत ही क्वालिटी शॉट, देखिए शफल किया, वेट किया और कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, गैप भी तलाश किया। ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं जब इनका दिन हो, और आज ऐसा लगता है इस शॉट से कि इनका दिन है। मौका भी मिल गया है। हैरान कुन बात है, 6 छक्के लग चुके हैं, ये सिर्फ दूसरा चौका था इनिंग्स का। और यासिर ने गेंद को गिराया खुद से ज्यादा दूर ने, वहां पर साद मसूद दौड़ते हुए आए लेकिन रन मुकम्मल कर लिया गया बड़ी चालाकी के साथ। फास्ट बॉलर्स को पाकिस्तान में इस वक्त जो बल्लेबाज बेहतरीन खेल रहे हैं, जाहिर है साइम अयूब और बाबर आजम का नाम उनमें सर फहरिस्त है। ये भी फास्ट बॉलर्स को बड़ी महारत के साथ खेलते हैं। यासिर स्पिनर के सामने इनके मसाइल हैं लेकिन फास्ट बॉलिंग के सामने बिल्कुल घबराते नहीं है, पेस पसंद है इन्हें। या और स्पेशली ऐसी पिच पे जहाँ बल्ले पे बॉल आए थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस हो, क्योंकि बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं। और आप देख सकते हैं थोड़ा हलचल मचा दी है उन्होंने कैंप में, फील्डिंग को बार बार चेंज कर रहे हैं, डीप स्को लेग और अब डीप मिड विकेट पे भी हारिस के लिए फील्डर रख दिया है क्योंकि इसी एरिया में ये ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं। अच्छी क्रिकेट, बिल्कुल जल्दी नहीं कर रहे, खुद पर भी काबू पाया है हारिस में। जो आप तब्दीली की बात कर रहे थे अलीम, वो यही आई है कि ये सिर्फ अब मार धाड़ पर यकीन नहीं रखते, अपनी बैटिंग में ज्यादा बेहतर तवाज़ुन लेकर आए हैं। ये अच्छा साइन है, भले फाइनल में ही सही लेकिन बहुत सारे लोग ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं जो कि अंदर आने के लिए बेहताब हैं क्योंकि हारिस बैटिंग कर रहे हैं और ये क्राउड फेवरेट है जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं। चेंज ऑफ पेस जिसे चेक किया और अच्छी फील्डिंग कप्तान इफ्तिखार की जानिब से। और अभी आपने जैसे बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हारिस के लिए कि अपने आप को अंदर थोड़ी तसल्ली लेके आए, थोड़ा तहम्मुल लेके आए क्योंकि शॉट्स तो बहुत मौजूद हैं, अक्सर बहुत जल्दी करते हैं लेकिन यहाँ पे इस टूर्नामेंट में एक बदले हुए नजर आए हैं और ऐसी ही एफर्ट की ज़रूरत है। कप्तान जो है वो लीड कर रहे हैं फ्रंट से, शायद बाकियों को भी इनकी तरफ देखना चाहिए कि ऐसी फील्डिंग, ऐसी एफर्ट करें। शॉट थर्ड है, दरअसल पॉइंट के पीछे 2 फील्डर मौजूद हैं ऑफ साइड में। ये वाइड रफ्तार में रद्द-बदल करना चाहा इमरान जूनियर ने, लेकिन इस पावर प्ले में अगर हम बॉलिंग की बात करें तो हमेशा T20 के खेल में कप्तानों की कोशिश होती है कि वो पावर प्ले के दौरान अपने बेहतरीन बॉलर्स का इस्तेमाल करें। तो आज शायद ये तीनों फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल कर सकते थे। इस पूरे टूर्नामेंट में ये एक जो है सवाल रहा है। पहले इफ्तिखार खुद बॉलिंग किया करते थे, आज नवाज से पहला ओवर करा दिया गया। देखिए तारिक भाई, जब बड़ा मैच आता है, फाइनल मैच आता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आपकी टैक्टिक्स कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करती है, तो शायद कुछ अलग करने के चक्कर में यही हुआ कि नवाज से पहला ओवर कराया गया, कुछ अलग किया जाए और डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन तैयार थे दोनों, मां सदाकत और यासिर खान। शायद लेफ्ट हैंड बैटर के आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर का लगाना, वो आप कह सकते हैं कि शायद इतना अच्छा आइडिया नहीं था। यहाँ तीर के सामने खुद आकर खड़े हो गए। बिल्कुल तस्वीराती गलती थी ये इस कैंप की जानिब से। आखिरी गेंद आने को है इस पावर प्ले की फार एंड से। अच्छी क्रिकेट, इस बार भी गेंद को धकेला, शॉट के साथ ही भाग खड़े हुए यासिर। पावर प्ले उनके पास, उनकी टीम के पास रहा 63 पर 1। जी हाँ बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि पावर प्ले जो है ये एलाइड बैंक स्टैलियंस के नाम रहेगा क्योंकि पहले ही बॉल से हमला शुरू कर दिया था। मां सदाकत ने पहले ही बॉल पर निकल कर छक्का लगाया। दूसरी जानिब यासिर खान ने भी बड़ी हिट लगाई। नवाज को तो आज आड़े हाथों लिया दोनों ही ओपनर्स ने। 19 रन पहले ओवर में ही जब आ गए थोड़ा काम आसान हो गया था, लेकिन
मां सदाकत के टैलेंट को दाद देनी होगी। जिस पॉजिटिव इंटेंट से उन्होंने बैटिंग की है, एक शॉट ही मारने चले गए, बड़े शॉट और अपनी विकेट गंवाई, लेकिन मुश्किलात कम नहीं हुई यूएमटी के लिए। उसके बाद आ गए हारिस और उन्होंने भी आते ही बड़े हिट्स खेलना शुरू कर दिए। शायद यही इंटेंट, यही फैसला करके आए थे कि जो भी बॉल जोन में होगा वो मैदान से बाहर जाएगा। और यासिर का ये शॉट तो बहुत ही बेहतरीन, उन्होंने बताया है कि किस इंटेंट से स्टैलियंस आज इस मैदान में उतरे हैं। राशिद रियाज पवेलियन एंड पर अंपायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन उभरते हुए अंपायर्स में से एक साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इमरान रंधावा। ये गोल्डन आर्म साबित हुए इस टूर्नामेंट के आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में जब इनको आजमाया गया। एक मैच में बैटिंग के जरिए प्लेयर ऑफ द मैच हुए थे, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी। खासे कारआमद क्रिकेटर हैं या जिन्हें आप कहते हैं हैंडी क्रिकेटर, स्पेशली इस फॉर्मेट में। यहाँ पे आप बॉलिंग भी करते हो, बैटिंग भी करना जानते हो और पावर हिटर भी हो, तो इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी बैटिंग, बॉलिंग और इवन फील्डिंग से भी। अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। और ये क्राउड जिसकी हम बात कर रहे थे, आज अच्छा क्राउड आया, देख के अच्छा लगा। और चाशिया से यहाँ पर बाल बचे, ज़्यादा तेज़ बॉलर नहीं है इमरान। और ये विकेट जो है, ये इस पर गेंद बराबर बल्ले पर नहीं आ रही, ये 2 पेस पिच है, ये नहीं भूलना चाहिए किसी भी लम्हे। क्या इसीलिए उन्होंने कदमों का भी इस्तेमाल किया था कि पिच ऑफ द बॉल तक पहुंचा जाए। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि चैंपियंस कप T20 के इस फाइनल में जो पिच है वो थोड़ा सा 2 पे जरूर, और ये हमने देखा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही। अक्सर पिचें ऐसी नजर आई हैं जहाँ पे दो बॉल थोड़ा फंस के आ रहा हो। और अगर इसमें हम मजीद इजाफा कर सकें, ये मिस फील्डिंग हुई अब्दुल समद से, तो एलाइड बैंक स्टैलियंस ने ये जो पहली चाल चली है, ये शुरू में जो उन्होंने पंच लगाए हैं 6.3 ओवर्स में 66 रन्स, ये खेल में उनको बहुत आगे लेकर चले गए। क्योंकि गेंद जैसे जैसे इसकी चमक खत्म होगी, शायद बैटिंग उतनी आसान ना रहे इस पिच पे। पहले 6 ओवर तो हम बात करते रहे कि कितने ज़रूरी हैं, बैटिंग हो या बॉलिंग हो। यहाँ पे 6 ओवर्स तो जीते हैं। एक बेस सेट कर दी है तैयब ताहिर, हुसैन तलत, शोएब मलिक, जहादात के लिए भी इवन, और आज 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। फुल शॉट खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद हैं, गेंद का रास्ता रोका मोहम्मद नवाज ने, जो अच्छी आउटफील्डिंग फॉर्म में रहे इस टूर्नामेंट में। और वही जो आप जिक्र कर रहे थे लैक ऑफ पेस का, ये बॉल भी वैसा ही था। और जो मीडियम पेसेस होंगे वो आपको ज़रूर तंग करेंगे। हालांकि सीमा बॉल था लेकिन पेस उस तरीके से बल्ले पे आया नहीं, और ये अक्कासी करता है कि 2 पेस विकेट है। कई पैचेस हैं जहाँ पे बॉल जब पड़ता है तो बॉल थोड़ा फंसता है। शायद यही मां सदाकत को भी हमने देखा, पहले थोड़ा बॉल फंसा और अगला बॉल थोड़ा तेज हो गया एक्स्ट्रा बाउंस के साथ। ये बॉलिंग कोच के यहाँ कितनी बेकली है। एक बार फिर ऑफ द विकेट, गेंद आहिस्ता आई, हारिस फोर्स नहीं कर सके। दूर से शॉट खेलना ये इतना आसान नहीं रहेगा रावलपिंडी में आज। और यही समझदारी दिखा रहे हैं UMT मार्कोर्स के बॉलर्स कि जो हो गया वो हो गया। पहले ओवर में 19 रन आ गए, लेकिन उसके बाद रिकवरी अच्छी की है, दूर बॉल कर रहे हैं, वेरिएशन के साथ बॉल कर रहे हैं। रन आएंगे कि वो टैलेंटेड बैटर हैं दूसरी जानिब, लेकिन जितना बच सकें उतना बचें। दूर बॉल करें, वेरिएशन के साथ बॉल करें, कटर्स करें, बैक ऑफ द हैंड बॉल करें, वही बचा था इस पिच पे। बैक फुट पर जाकर नर्म हाथों से खेला, अच्छी थ्रो सीधी आकर ये लगी स्टंप्स पर। 7 ओवर के बाद 69 पर है। क्या 19 रन आए, उससे वो बुर्ज खलीफा खड़ा हो गया पहले ही ओवर में 19 रन। लेकिन उसके बाद छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाते ही रहे। तीसरा ओवर ऐसा था जिसमें विकेट गिरी थी, ज़्यादा रन आए नहीं थे।
लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी ये पार्टनरशिप डेवलप हो रही है 41 रन की सिर्फ 27 बॉलों पे। और जब तक हारिस हैं उस रन रेट की इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर हैं जो एक ओवर में भी खेल का पासा बदल सकते हैं। जी हाँ, आगे चलकर हो सकता है कि बुर्ज खलीफा वो ना बना सकें, लेकिन मीनारे पाकिस्तान तक तो ले जा सकते हैं 1-2 ओवर्स को और अपनी टीम को चैंपियन बनवा सकते हैं। इससे सुनहरी मौका इनको नहीं मिलेगा अपने ही हाथों ये कारनामा करने का। बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। बड़ी इनामी रकम जीतने वाली टीम को यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी इस खूबसूरत ट्रॉफी के साथ। और बोल्ड हो गए, इस बार चार्ज किया, खुद को यॉक करा लिया और नवाज ने बिल आखिर बाजी मार ली। अरे ये क्या कर दिया, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी आपसे। तो वापस लाए गए थे नवाज को पार्टनरशिप तोड़ने के लिए और पहले ही बॉल पे निकल के अपने आप को यॉर्क कर लिया। ये बड़ी विकेट, बड़ा मोमेंट है ये इस फाइनल मैच का। देखिए पहले ही निकल आए, शायद खड़े खड़े रह के खेलते तो ज्यादा बेहतर होता। इतना कमाल बॉलर का नहीं जितनी गलती उनकी अपनी है। मोहम्मद हारिस 21 रन बनाकर वापस जाएंगे। 15 बॉलों को उन्होंने सामना किया, 69 पर 2। अच्छी फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में। हुसैन तलत सेंचुरी भी बना चुके हैं और ये टाइम भी अच्छा है, 13 ओवर अभी पड़े हैं, तो अपने आप को सेट कर सकते हैं लंबी इनिंग के लिए। 310 रन 51 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट बहुत इंप्रेसिव है, 156 की, 250 और 1 सेंचुरी इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो। अच्छा मौका है, टाइम भी काफ़ी है, हम लंबी इनिंग खेल सकते हैं। तैयब ताहिर जो कि पाकिस्तान टीम से फ्रेश अभी आए हैं, उनको पीछे रखा गया था। भाई यहाँ पे भेज सकते थे उनको, भेज सकते थे, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान टीम में भी जो उनका किरदार है उनको ज्यादातर 10 ओवर्स के बाद ही बैटिंग मिलती है। इरफान न्याजी और तैयब ताहिर को पाकिस्तान जो है डेथ ओवर्स के हिटर्स के तौर पर देखना शुरू कर चुका है। अभी हालिया दौरा जिम्बाब्वे और उसके बाद जनूबी अफ्रीका में। लेकिन ये देखिए, ये पहले से बाहर निकल आए थे और इनकी जो पहली गेंद थी पहले ओवर की, उस पर छक्का लगा था, लेकिन दूसरे की पहली पर विकेट। अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया ये तो। लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को बरकरार रखें, तो बनाने के लिए शायद हुसैन तलत को भेजा है कि जाइए थोड़ा डिस्टर्ब कीजिए नवाज की लाइन और लेंथ को। ये एक दर्द सरी रहेगी। यही वजह है कि हुसैन तलत इस टीम के लिए बड़े कारगर रहे हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स अब तक उनने बनाए हैं, 300 से ज्यादा। अच्छे नजर हैं, विकेटों के दरमियान उम्दा दौड़ते हैं, पार्टनरशिप्स पर यकीन रखते हैं। क्या बहुत ही आला मिडिल ऑर्डर बैटर हैं और यहाँ पे आए हैं क्योंकि हारिस ने अपने आप को यॉर्क कर लिया। देखें बहुत जल्दी निकल आए, कदमों का इस्तेमाल किया, खड़े खड़े खेलते जैसे मां सदाकत ने किया था पहले बॉल पे तो ज्यादा इफेक्टिव होते। दो नवाज जो हैं वो चोटी के स्कोरर हैं इस बैरियर टाउन चैंपियंस T20 कप में। एक हसन नवाज जिनके 312 रन से हुसैन तलत जो हैं उनके अब 311 रन हो गए। और ये वो शामें और ये मनाजिर होते हैं पोठवाहार में जो आपके दिल से खेलते हैं।
आपके पूरे वजूद में उतर जाते हैं ऐसे मनाजिर। बहुत खूब, क्या बात है। बहुत नवाजिश अली। और अब यह इस ओवर में महज 4 रन बने हैं, बाउंड्री नहीं आ सकी। खामोशी से छाई रही क्योंकि पहली गेंद पर विकेट हथियाई थी नवाज ने। 8 ओवर्स के बाद 74 पर 2। Well, what a great start to this final. And we've seen a very good crowd already in. Plenty of people still coming in. 2 wickets has really brought UMT Markhors back in the game, but that current run rate will take them to 185. That will be a very good total for the final. We watch Imran Randhawa getting ready. Crucial phase of the game. Salman Butt alongside me, former Pakistan skipper. Thank you, Shahji. Very imposing and aggressive start to the proceedings today by the Allied Bank Stallions. Ma Sadakat from ball 1 was right in the thick of things with a big 6 to start with. And they really took Nawaz to the cleaners in the first over. Then Yasir smashing 2 sixes in the end and putting up a big over, 19 runs to start off with. And it has been a wonderful start from the batting side. Once again, the sound of the bat of Yasir has been phenomenal today. Starting off from that hit in the first over, which travelled a very, very long way. Zohaib Azhar there with Kashif and Hamza, Mir Hamza, 3 young boys watching the game, and it's great to see a lot of people turning up for this final. And 2 top teams fighting it out for the championship, Barrier Town Champions Cup, and the Barrier Town champion of T20 cricket will be decided tonight. It's Markhors or Stallions. Santalat has been the form man and starts off in his usual way, just knocking the ball into the gaps, running hard. And it comes as no surprise to see his performances scoring 310 runs in this tournament at a healthy average and a phenomenal strike rate. Exactly. He's played in the way that T20 cricket should be played, especially when you are a player like him who has a responsibility to both take the innings along and also keep on pushing on the run rate. And he has done it brilliantly. 9 innings. This is the 9th one. 313 runs. Great strike rate, that 155.72. And his team would be looking at him to make use of this form and be there in this final and take them to a decent total. Yasir once again has a brilliant start, 32 of 23, and one of those days he would love to kick on, and everybody who likes to watch him would be praying that he carries on. This is 62, including the runs today, the average. He and Fakhr were only 27 runs apart before this inning, and Fakhr is yet to bat. Beautifully timed. It's another feature of this pitch we've seen, that a lot of the players who look to time the ball, they've come out being really good and more consistent in, as opposed to the ones they really want to bludgeon the ball. They've hit a few hits here and there, but not consistent. Yeah, Shaji, look,
timing has always brought about more consistency than the ones who bludgeon. And but Fakhr's got his own way of doing things, and that is a powerhouse sort Fakhr of is a a player. freak. Yep. And this is Tayyab Tahir back from South Africa, played well over there, and he adds weight to this Allied Bank Stallions team with his experience and his good form. As once again bowling the hard lengths, giving no room to the batters. Well bowled by Imran Randhawa. 2 overs for him, and it's after 9 overs. Stallions are 80 for 2. UMT Markhors, very experienced backroom staff. Great thinkers of the game. Attention to detail. That's the forte. Deep thinkers. And at times you feel there's too much attention to detail in that camp. As children also are out there with their families enjoying. Lots of youngsters watching this game along with their parents. Great family outing this. Chance. Umar is very accurate. Hits the bullseye. Saad Masood has been terrific in the field. Rashid Riaz will go upstairs. It's a fantastic piece of fielding, that. And the throw hitting the stumps. With the batter on full stretch, Hussain Talat. Very important phase of the game this. If this happens to be a run out, it will be a blow to the Allied Bank Stallions. And there comes the throw. He's well in. And this is good example of running full stretch and the bat all along the ground. Dragging it in. Wonderful technique of running in. Any young boys and girls watching, that's the way to do it. Full stretch. Obviously, you can go one better if you need to pull out the dive. But even then, if you're stretching that far, you're in a good position to dive if you have to. Good fielding from Umar. Young Saad has been wonderful. His skill sets have been spot on for this T20 cricket. He's batted well. He's been a live wire in the field, taken a few brilliant catches. Looks a fit young boy, very eager to do well. Bowling has been pretty much all right, and definitely learn a lot and add to that skill as well. Somebody who you can say has been one of the discoveries of this tournament. There's absolutely no doubt about it. Once again moving very swiftly. And now the batters will become aware that do not chance your arm against this young boy. It's the big final, and finals are more played in the mind. Mind games and holding the nerve are the two most important factors in big games. And now that Allied Bank Stallions are off to a wonderful start, they'd rather not mess it up. Markhors need wickets. This final is brilliantly poised. We're coming to the halfway stage of the first innings. That'll be the 1/4. Yeah, but also talking about the pressure of the finals. We know that big players come to the fore, and I have a feeling the way the crowd is building, by the time the run chase begins, we may have plenty more people in, and that will really inspire Fakhr Zaman, who loves the big stage. No doubt about it. He's such a player who loves the big occasion, and he's at his very best. We have seen him in the finals, and who can forget the 2017 Champions Trophy final. As this one is beautifully turned, great use of the wrist, and he'll look for 2. He's an aggressive runner, and completes that pretty easily, Hussain Talat. Putting a lot of pressures
on the fielders as well. Hussain Talat. That is just so risk-free. He's already getting into his stride. Have a look at that. Played it late and looking to go in straight lines as well. Quick turn. Put your head down and go. And that pressure resulted in a wild throw from the fielder. That is excellent cricket from Hussain Talat. Oh, he's hit it straight. Fakhr in the way. And that is the breakthrough that the Markhors would have been looking for. The informed man has been taken. A solid blow, but straight to Fakhr. How many times have we seen this mode of dismissal? Caught at short mid-wicket, pulling a ball which was there to hit. And front foot is fine. Just have a look at that half tracker. Just didn't get the placement, neither the height or neither along the ground. A midway sort of a stroke brings the demise of a man in form. Hussain Talat has to go for 9 and it's 3 for 85. Plays here. Some extreme hard work. It provided decent cricketing pitches throughout the tournament. Sarfraz, the head curator, Usman, and all the team, including Tony Hamming. All the hard work and all the entertainment for us here and all of you watching at your homes. Have a big thank you to all these curators and the hard-working ground staff. Absolute phenomenal job, guys. You can be very proud of that. Oh, did it get an edge, but it bounced just short of Nafe. At the halfway stage, Allied Bank Stallions 85 for 3. Getting cooler now. You would need plenty of layers to stay warm.
This is the grandstand. All the chairs have been taken up already. Nicely timed angle face of the bat. Akif, the left-hander, had to run around, but still the batters were happy with one. Santala there getting out, hitting one to mid-wicket. The ball was there with 4 written all over it. It's just the technique of hitting that stroke with your arms not fully extended. You find it hard to control a stroke with your arms that are bent. The levers, to use those levers with full extension is where you get the maximum purchase. And that is where Hussain Talat got out and he struggled. This one is played to deep covers. If you can see that replay once more, the Hussain Talat stroke, and then it will be better for the viewers to see that while he played the stroke, his arms were cramped up, they were not fully extended. Just look at this, no extension at all, and no intention of either keeping it along the ground or hitting it in the air above the fielder's head. Just a shot played. Wonderful shot this. Beautiful execution, and it really has been a display of great cricketing strokes from Yasir today. That straight 6 in the first over, one whip on the legs, Mohammad Azharuddin like, and then this lift over mid-off. Great shot. Wow, this is sensational from Yasir. Just the extension of that front foot push. Have a look at that. There you go, the bent front knee, head over the ball and bang. And look at how it flew away. Take a picture. Now a neat roll of the wrist, running hard, it's in the pocket. And they will come back for the second, challenging the fielder once again. Tayyab Tahir is very quick. Don't be fooled by his short stature. He covers the ground very quickly. It was always two played in the gap, and both good runners, and they both were quick enough, making it easy. Just have a look at this, good technique, both looking at the ball, the direction they changed, the bat they had in their hand, which enabled them to look towards the fielders where the ball was. Good execution and show of how to run between the wickets. Bat just turned in his hand a little bit. Yasir was looking to repeat that off drive. This time wasn't looking to hit it high. Wow, what stunning shots are these. You can see the breeze is picked up. Tariq Saeed has already gotten a couple more extra layers now after the sun has gone down, or it's about to go down. That's the Grand Pavilion. All the seats have been taken up there. Tayyab is busy. Gets a single off the final delivery of 11th over. Allied Bank Stallions 97 for 3. Great to see so many people in the ground. And the contest also, Salman, has been riveting so far. It's fluctuating, and this is how you want a final to go. It's right on the knife edge. Every time you felt Stallions were running away with it, they lost a wicket. The latest one being Hussain Talat when they were 85. Mohammad Nawaz back in. Oh, that is sloppy. Yep, skipper this time, and Nawaz not happy with Iftikhar.
allowing that run to be taken. There it is, pushed, solid push, but oh, should have been stopped. Just the dive, kicking the ball away. Nawaz has come back well after beating in the first over 19, and then he picked up the wicket of Haris, a very important one, and only giving 5 of his second. Go one better if he gets rid of his nemesis, Yasir. He's looking to close in on the first 50. Saad Masood, it's all happening. The ball is flying around at both ends. But in the end, just a single resulted after all that helter-skelter. Yes, Tayyab needs to calm down. He's just like running all over the place, and you don't need a run out. Both of these players are good enough to cover up for anything that they might use. Especially Yasir is batting fantastically, so you don't want to get out running for one run. In the larger scheme of things, his presence and his hitting ability is something that will make this environment more tense. Already they look tense. Misbah very animated. Fakhr with a little smile on his face. This is a good picture. Tayyab is an excellent player of spin. Yeah, it's attention to the game going in between, and it's really a sight which should be kept easy in a big game. Tayyab will use his crease very effectively against spinners, going back and forth. This is his strength. Come on, Advi. Come on, boys. This has gone massively big. Once again, it's Yasir, and he brings up his 50 in grand style. What a knock from Yasir in the big final. It started off with a 6 against Nawaz, and he gets to his 50 with another of Nawaz. Wonderful scenes there for Yasir. Come the big day, and he's finally kicked on from his 20s and 30s. And he's made it count when it really matters the most. 53 of 33 deliveries in the big game, and it still needs to carry on. And this was another huge hit. It didn't bounce here in our sight. It has gone somewhere beyond us in the dressing room. And it's Nawaz again on the receiving end. Just have a look at this, where it goes. Kept going. Nawaz is also just darting them in, asking for trouble. Look at it go. It went and went almost into the second tier of that stand. The Azhar Mahmood enclosure. That was a massive hit. And this is not the first one today. Remember one in the first over? That was at the far end. So he's got plenty of acreage, Yasir, in this innings. Hitting the second deck on the main Grand Pavilion, and second tier here on this end. Running hard again. He'll come back very, very easily to make it another big over. 12 gone, 108 for 3 Allied Bank Stallions. आज के दिन की जो बची खुची धूप थी
अब वो भी उफक में और शाम में मिल गई है। 108 पर 3, 8 ओवर्स का खेल बाकी है। यासिर ने अभी तक मैदान मारा है। यही बड़े मौके होते हैं अपना नाम और शोहरत हासिल करने के पाकिस्तान भर में, और उनने इसे बिल्कुल ज़ाया नहीं किया। टूर्नामेंट के शुरू के दिनों में खेले थे, बाद में ड्रॉप हो गए थे यासिर खान, और आज उन्होंने शुरू से ही आड़े हाथों लिया। नवाज को ये पहला छक्का लगाया स्वीप करके, और ये बड़ा ही जोरदार हिट था। फास्ट बॉलर के खिलाफ हमेशा से ही इनके पास हुनर मौजूद था। लेग साइड में खासे मौलिक साबित हुए बॉलर्स के लिए। और एक और दिल का शॉट, यहाँ पर फील्डर ने भी उनकी मदद की। 4 रन्स मिल गए, और ये खतरनाक घड़ी है यहाँ फील्डिंग टीम के लिए। मरीना, फील्डिंग का म्यार अच्छा नहीं रहा यूएमटी मार्कोस की जानिब से। यासिर का कैच जब वो 12 रन पे थे तब छुटा था चौथे ओवर में निसार के, और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। आकिफ और फैजान दोनों रिसीविंग एंड पे थे। देखें अगेन रेगुलेशन फील्ड है ये, बहुत लेट हुए। समद अच्छे फील्डर है, म्यार बेहतर करना पड़ेगा। आगे निकल गए थे। बहुत ही शानदार तरीके से आज आगाज किया। क्लैरिटी नजर आई इनकी अप्रोच में। कदमों का इस्तेमाल स्पिनर्स के खिलाफ जा रहे आना था। अच्छी शॉट सिलेक्शन कैलकुलेटेड देखी, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज फाइनल वाले दिन अगर आपका बल्ला ऐसे बोल रहा हो तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और हो नहीं सकती। अभी काम बाकी है इनका। ऑन द खेला, यहाँ पर 1 रन का और इजाफा होगा। वैसे भी ये बड़ा दिन है आज, क्योंकि सर्द मौसम की छुट्टी है, क्रिसमस है, काइट डे है पाकिस्तान में, बानिया पाकिस्तान का यौम विलादत। तो इनकी जो खुशी है वो दोबाला हो गई होगी। इनके सपोर्टर्स की, मुल्तान सुल्तान के थिंक टैंक की, जिनको बड़ा एतमाद रहा है यासिर खान पर। दोनों खिलाड़ी ही बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं। ऑफ साइड में तैयब ताहिर विकेटों के दरमियान तेज दौड़ना भी जानते हैं। बिल्कुल, ये एक ओवरऑल एक अच्छी स्ट्रेंथ होती है अगर आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी आपकी अच्छी हो, बाउंड्रीज आपको मिलती रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर डाल देता है। ये एक बैरियर टाउन की जानिब से शानदार इनिशिएटिव है। ग्लोबल जा रहे हैं बैरियर टाउन प्रॉपर्टीज एक गेटेड कम्युनिटी बनाने साउथ दुबई में। फाइन लेग पर अब फील्डर को आगे बुला लिया गया। वहां पर शहजाद हैं जो 12वें खिलाड़ी हैं। लाइन ऑफ अटैक जो है ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर रहेगा। 7 रन इस 13वें ओवर से 115 पर 3। यूएमटी मार्कोर्स ने 180 रन बनाए थे क्वालिफायर में नूरपुर लायंस के खिलाफ, और अब यहाँ एलाइड बैंक स्टैलियंस की टीम भी इस हालत में है कि वो 180 तक पहुँच सकती। 65 रन बनाना ये कोई इतना गैर मामूली काम नहीं होगा, बाकी मात्र 7 ओवर्स में। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तैयब ताहिर और यासिर भी थोड़ा सा मज़ीद कुछ ओवर्स खेलें। पीछे आने वाले बल्लेबाजों में ज़्यादा जो जाने जाते हैं शुएब मलिक ऐसे हैं जो
ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि रन स्कोरिंग कर सकते हैं। हुसैन तलत को प्रमोट किया गया था तो वो एक चंक पीछे रहेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों अटैकिंग खेलें। जो जिस तरीके से जा रहे हैं इनका मज़ीद 2-3 ओवरों तक आगे जाना ज़रूरी। शुएब मलिक से पहले आए हैं आज तैयब ताहिर खेलने के लिए। ये इतना बड़ा मैदान नहीं है जहां पर आपको दूरबीन की जरूरत महसूस हो। इनकी नजरें वैसे ही तेज हो जाती। एक और जोर का शॉट, लेकिन फील्डर खासा सामने है क्योंकि विकेट टू विकेट आ रहे हैं इस वक्त मोहम्मद इमरान। 8.8 की औसत से अब स्कोर चल रहा है और इसको मेंटेन करना पड़ेगा। 180 से कम यहाँ पे स्कोर जो है यूएमटी मार्कोस के अगेंस्ट लगाना वो ख़तरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है सेकंड इनिंग्स में आसान हो जाती है बैटिंग कदरे। बॉलिंग गो के मौजूद है एलाइड बैंक स्टैलियंस के पास, लेकिन बैटिंग के हवाले से मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है यूएमटी मार्कोस का। ये अभी शुएब मलिक को जहांदाद खान को बैटिंग करने के लिए आना है। तैयब ताहिर का जो किरदार है वो किलीद होगा। अच्छा यॉर्कर यहाँ पर मरीना, आप समझती हैं ये जो विकेट है आज जो शुरू में 2 पेस लग रही थी, ये खेल के दूसरे सेशन में जाकर इसमें कोई तब्दीली रूनुमा होगी? अभी तक जितने मैचेस हुए हैं सेकंड इनिंग्स में बॉल जो है वो ज़्यादा आसानी से बल्ले पे आया है, थोड़ा सा स्किड होना शुरू हो जाता है अंडर लाइट्स। और आज क्योंकि वेदर भी क्लियर रहा है तो हल्का से चांसेस हैं कि ड्यू भी आ सकती है, तो बेहतर और आसानी से रन्स बनते नज़र आए हैं सेकंड इनिंग्स में, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन एलाइड बैंक स्टैलियंस को रखना होगा उन रन्स का। आहिस्ता खेला, यहाँ पर दूसरा रन बनाने का इरादा है और विकेटों के दरमियान खूबसूरत रनिंग। रावलपिंडी स्टेडियम में पॉकेट्स इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए खुश भी नहीं है मोहम्मद फैजान से कप्तान इफ्तिखार अहमद। जब आप बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बल्ले के फ्लो पे नज़र रखें। आपको उतनी ही जल्दी से पिक करना होता है कि ये शॉट तेज़ी से आएगी या सॉफ्ट हैंड से खेली गई है, क्योंकि काफ़ी वेकेंट गैप है और ये दोनों बहुत तेज़ भागते हैं, तो आपको एज अ फील्डर बाउंड्री को बहुत तेज़ी से छोड़ना पड़ता है। पहले लेग कटर किया, इस बार सीम अप यॉर्कर। यहाँ पर कोशिश की थी इमरान रंधावा ने। आज फखर जमान के परस्तार यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले मैच में उन्होंने 89 रन बनाए थे। आज भी अच्छी बैटिंग करना होगी अगर वो चैंपियन बनकर निकलना चाहते हैं फखर जमान। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है। पाकिस्तान में सैफरी की टूर्नामेंट होना है, 1 डे टूर्नामेंट, और ये ओपनिंग के उम्मीदवारों में से एक होंगे। फिर से चाल चलने की कोशिश थी लेकिन ज्यादा बाहर निकल गए ऑफ स्टंप के इमरान। बिल्कुल प्लान अच्छा है पेस ऑफ रखने का। इमरान रंधावा ज़्यादातर अपनी वेरिएशंस पर रिलाई करते हैं और अभी इस ओवर में अभी तक बाउंड्री कंसीड नहीं की इन्होंने। कोशिश यही होगी कि ना करें, लेकिन फिर भी 7 रन आए हैं और तैयब ताहिर हिटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी कोशिश होगी कि अगर इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सके एक बाउंड्री से तो एक अच्छा ओवर हो सकता है एलाइड बैंक स्टैलियन के लिए। यहाँ पर दूसरा रन मैसर नहीं आएगा क्योंकि मिड विकेट पर इस बार खासे फुर्तीले नजर आए फैजान। बड़ी तेजी के साथ गेंद पर लपके। इस ओवर से महज 8 रन ही 123 पर 3।
पस मंजर धुंधला सा गया है। यहाँ झुटपुटे का वक्त है रावलपिंडी में। यासिर की नजरें अपनी सेंचुरी पर हैं। अभी 6 ओवर्स का खेल बाकी है। उनके साथ तैयब ताहिर जो हैं, ये इनकी आमद हुई है जनूबी अफ्रीका से और ये किसी हद तक थकावट का भी शिकार होंगे क्योंकि जहाज में लंबा सफर करके आए हैं शुमाली कुरार से। लेकिन बड़े फिट क्रिकेटर हैं और इन्होंने वाइट बॉल टीम में पाकिस्तान की बड़ी तेज़ी के साथ जगह बनाई है। अच्छा दौरा रहा इनके लिए जिम्बाब्वे में T20 मैचेस और फिर जो आखिरी जोबर का पिंक बॉल वनडे इंटरनेशनल था जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, बड़ी अच्छी इनने इनिंग्स खेली थी सलमान आगा के साथ मिलकर। और ये निकल चली खासी फाइन, पहुंच गए इमरान। तैयब ताहिर जो हैं ये क्योंकि बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, गन फील्डर हैं, किसी भी पोजीशन पर ख़ास तौर पर बाउंड्री से डायरेक्ट थ्रो कर सकते हैं, दबाव में नहीं आते और बैटिंग में भी ये वर्सटाइल है। ये डेथ हिटर भी साबित हो सकते हैं, जिस दिन ज़्यादा विकेटें गिर जाएं दूसरी तरह से भी खेल सकते हैं, तो ये अच्छा असासा बन सकते हैं पाकिस्तान की वनडे टीम का। मरीना बिल्कुल अच्छा स्किल सेट है इनके पास। निसार यॉर्कर की तलाश में थे लेकिन वाइट बॉल करा बैठे, इस फील्ड को चेंज किया था, फाइन को पीछे भेजा था। जैसे आपने तैयब ताहिर की बात की, इनके पास रेंज ऑफ शॉट्स भी हैं, पावर हिटिंग भी कर लेते हैं और मिसफील्ड यहाँ पे एक बार फिर UMT मार्कोर्स की फील्डिंग पे बड़ा सवालिया निशान रहेगा। हाई फील्डिंग ने कप्तान को बहुत बुरी तरह सर निगो किया है। एक बार फिर यहाँ पर अब्दुल समद थे जिन्होंने ये थ्रो पास कर दी डायरेक्ट थ्रो करने की बजाय, क्योंकि ये बड़ा मैदान तो नहीं है, ये MCG पे तो आप फील्डिंग नहीं कर रहे कि आपको साथी की जरूरत हो थ्रो लौटाने के लिए। सहल पसंदी का शिकार हुए खासी हद तक और उसका फायदा उठाया तैयब ताहिर और यासिर ने। ये बहुत ही मीडियोकर किस्म की फील्डिंग थी। आपका पहला काम ये होता है कि आप जल्दी से अटैक करें, बाउंड्री से बॉल पिक करें और क्विक रिलीज करें, क्योंकि एंड के ओवर्स में जो बल्लेबाज हैं वो हमेशा दूसरे रन की ताक में रहते हैं। एज अ फील्डर आपको ये समझना ज़रूरी है। अब्दुल समद बेहतर फील्डर हैं लेकिन आज थोड़ा सा लग रहा है कि फाइनल का प्रेशर जो है वो UMT मार्कोर्स के फील्डर्स पे नजर आ रहा है। और हैरान कुन भी है क्योंकि ये क्वालिफायर में जो नॉकआउट मैच था उसमें बहुत अच्छी बैटिंग करके आए इन्होंने, वहाँ जो 48 रन की इनिंग्स खेली थी। और शानदार शॉट, याफत का पुतला यासिर अब 70 पर पहुंच गए और ये गेंद खत्म हुई जाकर सीढ़ियों के मिड में। यॉर्कर की तलाश में थे निसार लेकिन जोन में नहीं बैठे यासिर के। बहुत ही वेल सेटल्ड है और इनका बल्ला आज खुल के बोल रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा भी चूकेंगे तो आपको अपनी गलती का नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल लेंथ बॉल दे दी थी इस मरतबा, ज़्यादा तेज़ नहीं है निसार, इसलिए बासानी यासिर ने थोड़ा सा अपनी अगली टांग को क्लियर किया और ये देखें बॉटम हैंड बीच में आया एंगल के साथ, ये 6 रन हासिल किए। निसार ने पहले दिन से ही बड़ी नपीतुली बॉलिंग की थी, सरकर्दा बॉलर्स में से एक रहे हैं टूर्नामेंट के, लेकिन आज जो है उन्हें छड़ी के गलत तरफ रखा है यासिर ने। इनकी लेंथ उनको रास आई है। हो सकता है कि फाइनल का दबाव जो है उसकी ताब ये भी ना ला सके हूं और यहाँ पर ये मजा का खेज फील्डिंग, ये फील्डिंग का मजाक कहा जाएगा इसे। बहुत ही मीडियोकर अप्रोच है, बैकअप जो है वो टाइम पे नहीं हो रहा, अननेसेसरी थ्रोज हो रही है। एक अच्छा गेंद था निसार का, यॉर्कर था जिस पे रन नहीं बना, लेकिन मिस फील्ड की वजह से सिंगल हुआ, उसके बैकअप ना होने की वजह से एक और सिंगल उन्होंने दे दिया, 2 रन बन गए। एक ये देख सकते हैं आप।
यहाँ पर थ्रो सीधी लगी विकेटों पर। यहाँ पोठोहार में कहा जाता है कि यहाँ की जो महक होती है, यहाँ के पहाड़ों की और फूलों और पेड़ों की, वो आपको दीवानगी की तरफ ले जाती है। क्या ये उसका असर है, ये जिस तरह की फील्डिंग हो रही है? यहाँ पर तरह तरह के आपको पेड़ नजर आते हैं। हरियाली इस दौर में भी देखी जा सकती। ये अच्छा शॉट, नहायत आला प्लेसमेंट तैयब ताहिर की जानिब से बैकफुट पर आए और सहला दिया इस गेंद को। चौके पर ये ओवर खत्म हुआ। बेहद महंगा 19 रन इसमें आए, 142 पर 3। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज फाइनल है, ठंड ज़रूर है लेकिन क्रिकेट का शौक कहीं पीछे नहीं रहता। फैमिलीज के साथ आए। तैयब ताहिर जिनकी हम बात कर रहे थे, वेट किया, स्लोअर बॉल थी लेकिन अपनी शॉट खेलने के लिए वेट किया और कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये इस चौके की मदद से 19 रन हासिल किए पिछले ओवर में। ये देखें, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एक झटका सा देते हैं अपने इनिशियल स्टांस में भी। ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है और इनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्योंकि इस सरफेस पे जो भी नया बैटर आता है उसके लिए आते साथ ही शॉट्स खेलना, रन्स निकालना आसान नहीं है। इस बार बाल बचे, ये ठीक तरह बल्ले पर नहीं आई यासिर के, क्योंकि ये शॉट है, ये इसमें सनद याफ्ता है। ये आमतौर पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर डीप जाती है गेंद आखिरी जीने की जानिब। ऐसा लगता है कि इनकी जो बल्ले की टो है वो अब बिगड़ गई, बल्ला इनको तब्दील करना पड़ेगा। बैकफुट पर खेलकर 1 रन और हासिल किया क्योंकि फील्डर पीछे पीछे हैं आखिरी 5 ओवर्स की मुनासबत से। यहाँ पे आकिफ को थोड़ा सा लेंथ और लाइन अपनी देखनी पड़ेगी क्योंकि यासिर, अब इन्होंने बल्ला भी चेंज कर लिया है बासानी। तैयब ताहिर और यासिर दोनों बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं और एक्सेलरेट करना चाहेंगे। आखिरी ओवर्स चल रहे हैं, चेंज ऑफ पेस ज़्यादा देखने को मिला नहीं आकिफ की जानिब से। अब यहाँ से ये 200 रन भी खारिज इम्कान नहीं है। स्कोर इस पोजीशन से एक बार फिर उम्दा प्लेसमेंट, 2 फील्डर वहां पर मौजूद हैं लेकिन आज दिन नहीं कुछ ऐसा है और ये इसकी बेहतरीन झलक थी इस दिन की यूएमटी मार्कोर्स के लिए। इस पर झुक नहीं सके फील्डर निसार। 4 रन। अच्छा प्ले जरूर किया था, गैप में था लेकिन 4 रन होने नहीं चाहिए थे। यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस हुआ एक्स्ट्रा, कलाइयों के इस्तेमाल से उन्होंने गैप पिक किया था लेकिन जैसे बार बार हम कहते आ रहे हैं आज फील्डिंग का मेयार बहुत ही मीडियोकर है। बिल्कुल टाइम पे नहीं झुके और टांगों के बीच में से ये 4 रन तोहफे के तौर पे दिए। निसार ने खासा लंबा टूर्नामेंट ये खेला, इससे पहले फर्स्ट क्लास सीजन खेलते हुए आए थे लाहौर के लिए। हो सकता है थकावट के आसार हों, बिल्कुल झुक ही नहीं सके। ये फास्ट बॉलर की वो टिपिकल फील्डिंग थी जो अगले ज़माने में हम देखते थे। लेकिन इसमें ज़रूरी होता है कि अगर 2 फील्डर मौजूद हैं बाउंड्री पे तो एक एंगल कट करता है और दूसरा उसको बैकअप देता है। यहाँ पर गेंद करीबन सीधी गई थी, वहाँ से भी 2 रन ले उड़े यासिर। कप्तान जो हैं आज इनके लिए ये सट पटा गए हैं। आज ये फील्डिंग देखकर
इतने बड़े फाइनल में, क्योंकि इस तरह के फाइनल में ये गलतियां जो हैं ये फिर आपको और सताती हैं। बिल्कुल, और ओवरऑल आपका जो टीम का एक वाइब है, जो मोमेंटम और कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाता है। जैसे अच्छी फील्डिंग उठा देती है टीम को, उसी तरह बुरी बार बार अगर फील्डिंग होती रहेगी तो वो गिरा भी देती है। यहाँ पे शॉर्ट रन शायद चेक हो रहा था, बल्ला क्रॉस कर गया लाइन को। यहाँ जो फैसल आफरीदी हैं टीवी अंपायर, उनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बल्ला जो है वो लगा कर गए थे मतलूबा जगह पर यासिर। ये अच्छी डिलीवरी इस बार एफर्ट बॉल थी, छोड़ती हुई गई यासिर के बल्ले को, सेट बैट्समैन को उन्होंने बीट किया। इस ओवर में लेंथ गो के थोड़ी शॉर्टर साइड पे रही है, लेकिन ज़्यादा रूम नहीं दिया। लाइन अच्छी रखी है आकिफ ने, थोड़ा सा गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की जानिब, लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस भी देखने को मिला। जैसे ही फ्लड लाइट्स रोशन हुई हैं, ऑफ द विकेट जो है वो गेंद तेज से निकली है। इससे पहले पिच सुस्त खेल रही थी। अच्छा यॉर्कर, एक बार फिर बल्ले की टो मुतासिर हुई यासिर की। 16वां ओवर जाता रहा, 151 पर 3 स्टैलियंस। Right, that Manhattan saying that it is favouring Allied Bank Stallions for sure. With that starting off with that Burj Khalifa, and they've been very quality buildings. Big buildings in that Manhattan. And that 15th over, just giving that momentum back to Allied Bank Stallions after a few slow overs on that side. 16 overs done, 151 for 3. Allied Bank Stallions well on their way to get to that 180 to 190 runs. 11 runs per over from here will get them to 195. They will be fancying that, that's for sure. Lots of families here. Mrs. Misbaulak and Mrs. Azhar Ali on your screen. It has been that sort of a tournament where everyone has enjoyed. And in this tournament, the big final. And we've got a good final in our hands as I welcome alongside me the former captain Salman Butt. Very good evening. Good evening, Ali Bhai, and good evening to everybody viewing this final. It's become a sort of occasion which is being enjoyed by the highest number of crowd that we have seen in the tournament, and rightly so. It's the big game. The champion of Bahria Town Champions Cup would be unfolded tonight after the result comes, as people watch with great interest, and definitely Allied Bank Stallions benefiting with the 3 players coming from the tour of South Africa, joining the team, adding weight to it. Haris Rauf comes in. We all know how aggressive and quick he is, and the game being played in his hometown. Well, this is the 10th corner at the moment. They looked very occupied with thoughts, and they look very serious, deep thinking. And this is the camp, on the contrary, due to the circumstances, quite relaxed. Yeah, you spoke about the 3 players which are included in Allied Bank Stallions side that has benefited Stallions. But one thing that has benefited Stallions has also been the fielding from UMT Markhors. They've been pretty sloppy. They have chosen a very bad game, the final, to be that sloppy. That's not good. Absolutely, Ali. This is something that matters because it affects the morale and the outlook of the whole unit. And here they seem scattered. There have been misfields, there have been balls going through the legs for the boundaries, there have been fielders who have not come down to the ball, ran over it, throwing, excessive throwing, overthrowing, gifting runs, a catch being dropped at short fine leg earlier in the day.
as this one wanted to pedal it from outside off. Saman, is it just pressure of the game? Because certainly this cannot be about skill, because we've seen them throughout the tournament. They've been on top of the table most of the time, winning games. What could it be that they've been poor? Not just one fielder, but 2 or 3 fielders. Ali, this match, which is called final, is a different breed. Come the knockouts, then they are more played in the mind, and the teams that hold their nerve and are able to control their minds are better off, regardless of the conditions. It matters what sort of a mental condition a team has, how relaxed they are, and the execution happens vice versa. If you are too tense, just have a look at this. It's too much concern for the outlook of a dugout. It's a game. You've got to give the impression of it being a game to keep your players easy. Absolutely. And it's certainly showing the faces of the fielders too. Oh, he's flicked that one for 4. That is quality. Yasir Khan has chosen a great game to play his best inning of the tournament. He's played all sort of shots, and that wrist work one more time. Just brilliant. Absolutely wonderful this. Once again, great use of the wrist, just getting under the ball and just knowing where the gaps are and then toying with the bowling. That is the kind of command and authority that he is playing with. And what a great game. He has chosen to bring the best out of himself. Lucky man. He wasn't very happy, was getting early out, 20s, 30s, good looking cameos, but never went along to make a big one. And here comes the final, and he turns up with his A game. And Salman, it's not just being brutal hitting. Yes, we've seen so many sixes from his bat, but he's just constructed the inning beautifully. We're going to have a look at his inning so far, and I want you to just tell us that how well he's played. Just have a look at this. Not a single moment in this whole inning where he's played a shot which is different to a cricketing stroke. He's used his feet, flicked the ball beautifully, drove the ball as well, kept the shape. Just look at that. Wonderful use of the wrist, just a flick, and then power, and also great technique of hitting. And then have a look at this stroke, how stable he is. Still head, firm base, and big results for him. Top class display this. Wonderfully bowled, well disguised, as Tayyab wanted to launch into it, but no connections. 17 gone, it's 158 for 3. Right, these numbers suggest they're having an off day. Off evening rather. UMT Markhors bowlers, 1 wicket for 35 runs for Nawaz, 1 for 20 for Akif, and 1 for 28 for Jawad. Oh, he's played again straight to the fielder though. 159 with 17 deliveries still to go. Yasir looking all set for a big one. And we've seen that happen whenever Yasir gets going, he gets a big one. There have been many occasions that we have witnessed in club cricket or local cricket, even the national T20 we've seen, he scores those 100. He converts that start to hundreds. That's the quality. Some people have this special ability to turn it big come the big time, as this one will be caught easily. A shot which is not very easy to execute if you're not having a great day. Tayyab, 17 of 18, he has to go out trying to flat bat one over cover, not managing to time it. And Akif picks up another wicket and some relief for the Markhors. It's 159 for 4. Yeah, that extra bounce again. And Akif, we know that he has that ability where he can extract that extra bounce. Cleared front leg, but no execution, no timing at all. And Fakhr has been very good in the field.
17 of 18, 159 for 4. Well, it's Jandad, the left-hander, who comes in. Somebody who has the reputation of hitting big balls. 27 games, not great amount of runs, but we all know his ability. As he goes after one straight away, lucky this time, goes to the boundary of an inside edge, and Nafe, well, he didn't have a chance. Inside edges are hard to handle for any keepers. Yeah, makes me believe even stronger that fortune does favors the brave. First delivery went after it, inside edge, and a boundary. Absolutely no chance. Doesn't matter who was wearing the gloves on this occasion, it was too far away. Akif again, predictable. He's been hitting the hard lengths once again, and this is big. It's huge, it's over the ropes. Another 6. Great entry by Jandad, a 4 and a 6 to start off with, and the launch continues. And things get more tense for the UMT Markhors. Yeah, no wonder he's been promoted above Shoaib Malik, because they know the potential, they know the skill that he can hit big with some ease. No problem, no fuss about it. Just stand, waits for it, clears the front leg, and easily heaves it over that long on for 6. Wonderful. Now, why change the length now? This was right in the slot. Perfect elevation for the batter to execute such a stroke. Oh, he's missed out on that. He's missed out on that full toss, I tell you. He's disappointed. Maybe surprised that he was not expecting a full toss. But that's a rare dot delivery. Lucky the bowler, Akif. Just have a look at this ideal height for this slash, and it would have been a tester for any fielder had it gone straight to the fielder. No more tests, please. They failed enough already. Not any more tests for them. Once again, this will be one bounce and to the fielder, just the one of the over, as 18 overs are bowled, and it's 170 for 4. boys. Sir, one leg dena, sir. Sir. One leg. Right, it's Faizan to bowl the penultimate over, the 19th one of the inning. Everything, they're trying everything. This can go either way, I tell you. It's cold out there, and it's an urgent emergency call. Please come and bowl. 19th over. Definitely not the part of the plan, but who knows? He might bowl wonderfully well. This one straight away a dot ball, a wide Yorker, and this is what he has, something that he relies on. He bowls wide Yorkers. So there must be some communication. Yes, the batters are going across to each other. The options they had, Salman, were Mohammad Nawaz. Either he could go for them, but left-arm spinner against a left-hand batter, Jandad, who can hit big, might not be a good advisable thing to do at the moment. Once again, well bowled. He has hit the length perfectly on both occasions, not allowing Jandad to get underneath the ball. And that is the key. The perfection is the key. If you miss this length, then it can be disastrous. But 2 balls have been wonderfully executed. Yorkers, wide ones. Yasir needs to go deep in the crease. And he does. And this one is a monster. It's huge. And it's out of the park. Security having to take cover. This is something they're there to provide.
And the crowd enjoys Yasir, who now is a stroke away from a brilliant 100. Oh, that's a massive hit. Covers the line. Knee down. The ball up in the air. That is a strong shot. Massive hit. This boy is so strong. 94 he moves up to. And flat bats it. Flat bats it for 6. Oh, that's 100 for him. Sensational. And what a match to choose to score his first 100 of the tournament. That is a top-class 100 from a top-class player. Yasir Khan, take a bow. You played a fantastic knock. Magnificent this from Yasir. What a 100, what an occasion, and what a way to bring it up. And he thanks the God, goes down and prostrates. And look at the teammates, look at the joy. And the crowd also enjoying it. Every bit of this innings has been top class. All the strokes, the power in the strokes, and the shot selection, and whatever he has done or touched in this inning has turned to gold. Absolute gold. Absolute gold from Yasir Khan. Just 56 deliveries, 7 sixes, 5 fours, 178.57 the strike rate. Doesn't get any better than this. Scoring 100 in the final. And again, it's up in the air. Fielder coming under. Who takes it? It had to be Nawaz, one of the safest fielder in UMT Markhors team, and that ends a fantastic knock of 100 of 57 deliveries. What a time and what a match to do this. Absolutely brilliant knock this from Yasir. He's taken his team to a score which in a final is very, very healthy, and it's going to impose a lot of pressure on the opposition. And once again, the length was there, just he didn't get it in the middle. And the idea was right. After hitting 2 big balls and getting 100, the confidence was there. But this time, not the same timing. But still, I think he's done a great job for his team, for the crowd. And look at how happy they are. And they have a total on the board, which is quite imposing one. It's 183 for 5. Next one. 7 more deliveries to go in this inning as Shoaib Malik walks in. Yeah, he's looking for that car corner, shuffling across, but could not quite get under the ball. That's how the situation is. You have to go after everything. 19 done, 184 for 5. Right, they've been penalized. Doesn't get any worse than this. They've been penalized for that over rate, so they'll have to have 5 fielders inside the circle for the last over. My God, it has certainly been not UMT Markhors' evening. Yes, worries just keep mounting for them. Yeah. And it just hasn't been their sort of night so far. Yeah. Who knows what happens in the second innings, where the momentum goes. But till date, it's all Stallions, as this one is a full toss and it's dismissed. 4 wonderful runs. Shoaib Malik is there and he's not going to mess about with this sort of stuff. Yes, and exactly that 5th fielder coming inside the circle, he would have been at the boundary line, that square-leg fielder, and it would have probably gone straight to him. But the fielder being inside the circle has costed them 3 extra runs. Everything matters. Every little detail matters in a big game. You were supposed to be on time. Shoaib Malik does well. Just gave the strike back to Jandal, who has a better chance of fitting. So yeah, you got to be on your time.
This game is now a lot to do with what Fakhar Zaman does when he comes to bat. And here is the wicket of Yasir. Another slow one. He wanted to get under it. Didn't get the timing. And in the end, Nawaz, with his safe hands, holds on to the catch. And a relief for UMT Markhors. But Jandad has been on fire. And he's now on strike. He's picked the fielder. Shoaib Malik is too quick, coming back for the second. Oh God, he's too good. How fit this man is at this age. Brilliant. A lesson for every youngster. Well, this is speed, and he has always had this capability of running like a flash between the wickets, turning around in a matter of seconds, and look at him go. No chance. Wonderful runner between the wickets. One of the fastest sprinters who has played this game for Pakistan. Once again going for the big heave, no connections. 191 for 5 with 3 balls to go. And Jandad just needs to have a proper look at the ball. Just can't swing it wildly. Don't you worry, he's got the master on the other hand who's quickly gone to him, advised him what to do, what needs to be done. So let's see what the difference that will create. The second last delivery of the inning, 191. Yeah, he waited for it, and he has hit it for 6. Iftikhar was in business for a little while, but that conversation with Shoaib Malik has surely worked. The valuable experience of Shoaib Malik comes into play. Even from the other end, the advice to just wait and watch and then go after the ball. And exactly this is what he has done. Just look at him, wait just for that fraction of a second and then launch. And by the way, poor length to bowl at this time. This time goes for the Yorker, but definitely 2 on. Too easy this for Shoaib Malik to touch and come back. As the runs now are 199 at the end of the 20 overs. It is a massive score in any final. And when the UMT Markhors come out, they'll have their work cut out with the batters needing to respond to this mammoth total. And Fakhar Zaman for them will hold the key. 58 runs coming of the last 5 overs. That has been the story throughout the inning though. 199 runs they've scored. So that means UMT Markhors will have to score exact 200 in the allotted 20 overs to win this game and be the champions of this championship. Lot to worry about for UMT Markhors. In particular, their fielding. They've been below standard throughout this inning. Missed so many chances. But this pep talk, Salman, what would this be? What the message would be from Iftikhar?
Thank you very much, Ali Yunus. None other than the man of the moment, यासिर खान मेरे साथ हैं. यासिर, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो. बड़ा फाइनल था, बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई आपने. सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, जितना अदा करूँगा कम है. और इस दिन के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, दिन रात एक की है मैंने इसके लिए. और मैनेजमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया. और उनको मैंने यही बोला था कि मैं 100 का प्लेयर हूँ और मैंने 100 करना है. मैं हमेशा मेरा टारगेट ये होता है कि छोटा नहीं सोचता 50-60, क्योंकि मुझे अपना पता है कि यार मैं 100 का प्लेयर हूँ. तो हमेशा 100 का सोचता हूँ. तो अल्लाह ताला ने 100 कराया और इतने अच्छे मैच में कराया. और मैनेजमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया. पहले ओवर से ही बल्ले के बीचों बीच बॉल आ रहा था. पहले ओवर में 2 छक्के लगाए, जो दूसरा खास तौर पे छक्का था. तो इंटेंशनली जाते साथ ही अटैक किया या बॉल मिलते गए और आप खेलते गए? प्लान था शोएब भाई के साथ. रात को मेरी मतलब उन्होंने मुझे होटल में बुलाया कि यार सुबह तुम्हारा क्या मतलब माइंड उन्होंने मेरा बनाया कि तुमने कैसे कहता तुम इस मतलब जिस टाइप के बैट्समैन हो ना उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर रहे आप. और मैंने वही सोचा कि शोएब भाई सही कह रहे हैं, उस पर मतलब मैंने सोचा और उस तरह किया और अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिया. बहुत ज़बरदस्त आपने शॉटें खेली. कोई फेवरेट 1-2 शॉटें बताइए आज की. सर वो फ्लिक जो मारता हूँ मैं, रिस्ट से मारता हूँ, ये मेरा फेवरेट शॉट. जो रोलिंग शॉट था? नहीं, फास्ट बॉलर को छक्का जो मारता हूँ. और एक रोलिंग भी आपने मारा. हाँ, बहुत ज़बरदस्त शॉट्स ऑल ओवर. हमें भी बहुत मज़ा आया आपकी बैटिंग देख के. थैंक यू सर. वेरी वेल डन. और मैं अब्दुर्रहमान यहाँ पे मेरा काफ़ी मुझे सपोर्ट करता है, वो यहाँ पे आया है और वो भी बड़ा खुश हुआ है. और ये वो देख के काफ़ी खुश हुआ होगा. चले, हम भी बहुत खुश हुए आपकी बैटिंग देख के. ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम. अभी तो आधा मैच हुआ, लेकिन अभी तक वेरी वेल डन. थैंक यू सर. That's Yasir Khan, and back to you guys upstairs. Thank you, Shah Faisal. He believes in scoring 100. Says that he likes scoring those big hundreds, and we saw that. And what a time to choose that 100 in a big final. Let's have a look how he did it. That's the start of the inning. Maz and Yasir Khan started off brilliantly. Yeah, it was aggressive and it was right putting the pressure from the word go on the opposition. Both the openers taking Nawaz to the cleaners in the first over. 3 big hits, all crossing the rope pretty easily. And Maz also looked very aggressive and very clear while he stroked the ball. And this one was a pull which he didn't time and he was caught. And Nawaz, just look at that fury over there. And then came in Haris and started off with this brilliant flick over fine leg for 6. And Haris and Yasir continued to tonk the ball, and Yasir was just wonderful with all the strokes that he played. Risky ones coming out and then losing the ball, and in the end Haris getting bowled from Nawaz was pumped up after this wicket. But then it was the show of the man named Yasir Khan. Sensational 100. Tayyab came in, joined him. Some quick 5 boundaries, running between the wickets, and he went. And then came Jandad Khan, who had the license to thrill. Hit the first delivery for 4 and the other one to 6. And Yasir Khan carried on in his merry ways. Scored those couple of hundreds to bring up, scored those 6s to bring up his 100. A magnificent one in the final of the Champions Cup. That is fantastic. So good to see a youngster standing up, raising his hand and scoring in a big match. He left after scoring his 100, had to go big, score some quick runs in the end. Jandad carried on with some lusty blows. Shoaib Malik joined him, advised him, and got a 6 in the end, scoring 199 for the loss of 5 wickets in their 20 overs. Right, UMT Markhors, who usually are a very good chasing side, they'll have to do 200 runs at 10 runs per over to be the champions of Bahria Town T20 Cup. That's coming your way right after the break. With the angle picked up beautifully. I mean, right across, it's gone straight up. Oh, Haris goes, and Haris goes over. It's gone straight up, and it's been shelled. और बोल्ड हो गए. इस बार चार्ज किया, खुद को जॉब करा लिया. Oh, he's hit it straight. Solid blow, but straight to Paha.
smashing blow that has gone way back. And flat bats it for 6. Oh, that's 100 for him. Sensational, and what a match to choose to score his first 100 of the tournament. That is a top-class 100 from a top-class player.
cricket stadium. They know it. Although they've done the part, the first inning has been done. They need to do good in the second inning too. It won't be easy because they will come hard at them for sure. A lot of potential there. A lot of emotions as well, as Haris just gave Fakhr a tight hug. Well, all they need to do, UMT Markhors, is not look at the total altogether. They've got the potential, they've got a solid top order, middle order. Just have to divide this total in phases. They can do it, but it's not going to be easy. I like the aggression already. Just saw that. Fakhr Zaman said, yes, I will face it. I'm going to be the one who's going to lead this run chase. Remember the last time when he faced Jandad? Jandad went right through him to get his wicket. Another very exciting battle between Jandad and Fakhr Zaman in our hands. Just cannot miss this because he's got that license. Those numbers staggering. 135 the strike rate, 47 50s, 300s. Maybe he would like to increase that to 4 in this game. 6,990 runs. 100 from Fakhr Zaman. That will really light this up, the run chase. Yeah, he's got a partner, Khwaja Nafi, at the other end. We all know what he can do. Had a tremendous tournament so far. This partnership up the order can set the foundation for UMT Markhors in pursuit of 200. I know we talk about skill and temperament, Marina, but this inning from UMT Markhors will be all about strike rate. Who can strike big against somebody like Jandad? 27 wickets, 3 for 9 his best. Just not Jandad, there are plenty of them. Haris Rauf included. There's Abrar. There's Muhammad Ali. Who do you target? My God, that's a brilliant bowling lineup. Yeah, no weak link there in their bowling lineup, but they have to be very calculated. Stay pragmatic, but control aggression is the key. Oh, again on target. Similar sort of length he bowled the previous occasion when he got better of Fakhr, but the line was outside the off stump. Fakhr Zaman getting the form at the very right time, back-to-back 50s, and the last one was in a winning cause. Jandad, we know he'll be pitching it up, looking for that swing. Yeah, he went up to him too. Good aggression. A lot depends on this partnership, I tell you. A lot depends on it. One slip in place. Down the track. And 4. Not quite from the middle of the bat, but he will take it. That will give him a lot of confidence. And the attack begins. Fakhr, he's carrying his 89 into this final, and he knows the requirement. The use of power play is very crucial for UMT Markhors down the track. The length actually gave him a bit of time to free his arms. But the thing is, he likes to play in front of square. That allows him a bit of protection rather than just dragging behind square. I'm going to ask you about his stance also, very standing. On, off stump, middle and off. Again, kind of down the track. This is good, pulling back the length just a little and a few smiles. Because he knows it, that he's got that right, Jandad. Yeah, Fakhr, he likes to open up to both sides. That's why he covers most of the stumps. He can play into the offside. If the line is there, he can drag it into the leg side. So his initial movement is quite steady, crouched, waiting for that length. Yeah, standing in the middle and off. He will always be a candidate for an LBW. But who cares? You need to go strike rate. You need to go big. Whatever works. Will be a wide. So he's doing different thing. At least he's just looking to do different things and maybe unsettle Jandad. He knows that he's going to pitch it up. It wasn't a bad delivery, except the line. I think the length was good.
He brought the ball back into Fakhar Zaman, but just straying down the leg. But he will be very aware where he's standing. Want to meet the ball in front of his eyes. Great crowd, and you have to say this. And they've been treated with some quality cricket too. Good pace, good pace. Good work behind the stumps too by Haris. Well, Markhors, so far they've chased 189 in this tournament against Lions, but this is a very threatening bowling lineup. Yeah, that's why I asked you, who do you target? Muhammad Ali's been brilliant. There's Abrar, there's Jandad, there's Haris Rauf, there's Usman Tariq, the mystery man. Target the bad deliveries. Don't look at the bowler. Well said, very well said. Right, Khwaja Nafe. Swing, swing. This is risky, the way he's standing, Nafe. Yeah, we've seen that. Jahandad with the new ball. He's always looking for the swing. He's got immense control. On that occasion, slightly staying down the leg. We'll see a lot of input coming from Haris Rauf, Shoaib Malik. He's got a good circle around him, Jahandad. Khwaja Nafe, he needs to calm down his nerves. This partnership up front is important for UMT Markhors. It's quite easy at this stage. You're overawed by the situation. Khwaja Nafe. But Marina, then again, it's the situation like these, it's the game like these that makes a hero, which we already saw in the first inning. Yasir Khan raising the hand for the team, doing it. Can Khwaja Nafe do that same for UMT Markhors? Of course he can. He just needs to be calculated. Just trust his own beliefs, his own strengths. And we know that he's got huge range of shots. He's delivered on and off for UMT Markhors in this power play, in this tournament as well. Just need to back himself. Don't look at the total altogether. Just play his own game. Oh, he's flicked it one. Fielder. Oh, that was an excellent effort. Excellent effort, you have to say that. Yasir Khan, a deep square leg, fantastic. Has he done enough? That's the question. Yeah, definitely they'll have to check that before he gives the final verdict. Let's have a look. Great effort, Marina Iqbal. He's not done with the 100. Look at that, the commitment. Oh, I feel unlucky for him. He's got the ball in his hand and touching the skirtings. But have to give full marks to the commitment and effort. For a moment, I think Nafe had his heart in the mouth. But that will go in Nafe's way. Yeah, 10 on 10 for the effort. 6 given. 1 done, 13 for none. "19 runs came off the first UMT Markhors over when they were bowling, by the way. 19 wickets for Muhammad Ali. 13 for this time. Oh, beautiful. Beautiful delivery, leaving the left-hander. So they've got the start. 13 for none. Muhammad Ali, the leading wicket taker, as you said. Have a look at that. Nafe was cramped up for the room, bottom hand coming into play, but look at the effort. It's his day. Just couldn't really manage to balance himself. But a great effort. Yeah, he even tried, could have tried to flick it back inside the rope. But everything happened so quickly, the motion.
Just couldn't manage. That's what you expect from Muhammad Ali. The line, the length, in control. He's the leading wicket taker, remember, in the tournament. He's bowled beautifully, not just with the new ball, but the old ball, the variations that he has adopted. Brilliant. There he is, on the top of the table, picking up 19 wickets, economy 6.4. And as you mentioned, with the new ball, he's been really calculated and disciplined. But even with the older ball in the death overs, it's been hard to get runs going against him. And again, and again. Yeah, he knows it. The look says, I got you. Oh, what a contest there. They're enjoying it, Allied Bank Stallions. You can hear each and every player out in the middle. But that is a great channel. Just leaving him. Fakhar Zaman. Not enough room for him to cut. Not the length to pull. It's a perfect channel. Being a little sneaky. Slightly poking Fakhar Zaman though. Once you're so perfect with your line and length, and then you adapt those variations, you get unplayables at times. They've got protection there. They know Fakhar Zaman well. Yasir Khan is everywhere. Everywhere. He's just owned this game. He's just bossed one with the bat. And now in the fielding, he's doing well. Fakhar Zaman, he took his time in the last game, but then accelerated. But that was a different bowling lineup. He needs to keep that in mind. It's not going to be easy runs when you look at the bowling options Haris has. So you might want to pace your innings and this chase with some calculation. Yeah, nice and solid, right behind the line. Khwaja Nafe. 200. Marina Iqbal is pretty much chaseable. There shouldn't be a hassle about it. They can do it with some ease, some cool. They do need partnerships. Yes, early on, a good start is required. But they've done it before. They were 29 for 3, remember, in the qualifier and finished 180 after losing 3 wickets. But that was Fakhar Zaman. So one of them, if one of them, Nafi or Fakhar, can play deep, runs will keep on coming. They've got enough firepower in the middle and the later middle order. Oh, he's tried to do something different and played it straight to the fielder. Oh, Khwaja Nafi, you missed out on such an important opportunity. Was there a need of it? I don't think so. Trying to be cheeky, Khwaja Nafi. But wicket is just around the corner when Muhammad Ali has the ball in his hand. He thought of ramping it into the leg side. The line wasn't there. Opted for the same shot, but to the third. The fielder was waiting there. Yeah, not the smartest of the option to go when you've got protection down in the deep. Easy catch to Ibrar, and first one has gone. Khwaja Nafi back in the hut with a painful walk. One down on 14. I like the line you used. Painful walk back. Surely. Mohammad Faizan at number 3, 271 runs. Strike rate of 107. Don't look at the average. It's about the strike rate, as he said earlier, when chasing 200. Wide. That stance of Fakhar Zaman has at least
messed up the line and the length from Jandad. But the last delivery of the last over, Muhammad Ali has been spot on with his line and length. Why would you do such thing to him? Yeah, the game awareness from Khwaja Nafe. Into the leg side, it was a good option. Didn't have the fielder at the boundary, but once you recognize the line is not there, you need to rectify your own shot. Just don't go along with it. Hello. Wrong number. That's what he should be telling to Fakhar Zaman. He's not the sort of a bowler that will let you hit such sort of deliveries. Fakhar would be hating that smile from Jandad. Was in his zone, but just stayed leg side-ish. Couldn't really get close to the delivery. The length was there. Oh, just be careful against Fakhar. A teasing smile. Yeah, not finding the gap at all. No timing also. Change in pace by Jandad. Mas the fielder. They're all up and ready for it. Fielding has been a huge letdown for UMT Markhors, but Allied Bank Stallions usually quite sorted. Jandad, he's just trying to create the room, back of the hand, probably picked it up. Couldn't really pierce the gap though, but something is coming, I can tell you that. Yeah, he's trying too hard maybe. Maybe look to time it for a few overs. Then you get used to the pace of the pitch. Then you can go for the glory. That's a good point you pointed out. The other day when he started his innings, initially he started to time it. On this occasion you can see a lot of bottom hand coming in, power coming in. That's why he cannot get a good connection. Jandad has a decent pace, so maybe he needs to rethink his plan. They're changing the fielders. Third coming inside the circle. Mid wicket going at the boundary line. Square leg also deep. That's where Fakhar Zaman is looking to heave. But he has the ability to go over offside too. This is better. He's finding it difficult to hit. Rotate the strike. Don't let the pressure get to you and the team. And that's the best way to do. Keep rotating the strike. And now Fizan out in the middle. He also needs to understand his role with Fakhar Zaman. Can be explosive from ball one, but right now they need a different strategy. Be positive, be pragmatic, but understand what shots you can offer attacking Jandad. They've got a master right next to Jandad at mid-off. Mr. Shoaib Malik. He would know. The other thing Allied Bank Stallions did exceptionally well was rotation of strike, running between the wickets. They put pressure from ball one. Yeah, no pressure there whatsoever because they're going global. Barrier Town. Properties to develop a world-class gated community in Dubai South. Brilliant. Yeah, coming back to the same question again. The rotation of the strike. Once you were getting boundaries, UMT Markhors were on the back foot right from the first over. Ah, that sounded sweet. Wow, what a way to finish the over with a six. Much needed for Markhors. Ends the third, 22 for 1.
brilliant crowd in. They're enjoying some quality cricket. Allied Bank Stallions at the same stage were 29 for 1. Oh, fucker! Oh, fucker, you've hit it miles into the stands. That's what they're all here for. A fucker is a man special. Just the sound of that echoed all over the ground. Length was there, freeing his arms, and Fakhar has had enough. Targeting Muhammad Ali. The very first delivery, you can look at that. Clearing the front leg. Middle leg to perfection. 2 sixes from last 2 deliveries by UMT Markhors batters. And that one was more important because Fakhar Zaman was finding it difficult. This will ease the nerves. I don't know if you need to do this. It's just that Fakhar has realized the length Muhammad Ali will be bowling to him. First over, he let it go, understood that. And the previous delivery was the same length from where Muhammad Ali was beating Fakhar outside off stump. He went and picked that length quite early. On that occasion, the good thing was he knew what Khwaja Nafi did. So he pulled out of that shot. But one thing he should have realized, it was not the same Fakhar Zaman. He's been there for 12 deliveries before when he faced that one. His looks look determined. Oh, he waited for it. The idea was right. Just not quite executing it. Slower one. Yeah, with Muhammad Ali, you would expect being very disciplined wherever he's bowling, the line, the length. So as a batter, you need to do something different. That was Hizan in his slot, showing the full face of the bat, and that was just a jab, sailing all over the boundary. And Fakhar, well, he got motivated. In the first delivery of this over, he went after Muhammad Ali. He's giving himself room. He's bowling those smart deliveries outside the off stump. That's a good battle. A bowler who's the most leading wicket taker in the tournament against a batter who's looking very dangerous. These are his numbers. Had a slow start to the tournament, 39, then 53, then 49 and 89, coming towards the business end of the tournament. So scoring runs when it matters. Yeah, he needs to put the thinking cap on because Muhammad Ali is quite consistent and persistent in his line and length. You as a batter have to do something different, probably use the crease, coming down the track or going deeper. Yeah, good comeback. Excellent comeback from Muhammad Ali. And that's what you expect from a quality bowler. He was surprised, rather shocked from that first delivery hit. Then has recovered well with his line, with his pace. He's a very strong-headed bowler. Bowling almost the same line and length from which Fakhar put him away for that maximum. But again, now asking the batter to come up with a plan rather than him changing his line and length. So that tells a lot about what character he has. Oh, a flat batsman, no timing at all. He's looking for those, he's looking for that length. He looks determined. 4 done, 29 for 1.
सर्दी और तमाशाइयों में इजाफा हुआ है। सूरज ढलने के बाद लोग जो हैं मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर रावलपिंडी स्टेडियम आए हैं अपने पसंदीदा और महबूब क्रिकेटर्स को देखने के लिए। अबरार उनमें से एक हैं। पहली गेंद को इससे मोड़ने पर इक्तिफा किया। 1 रन का इजाफा फखर जमान के स्कोर में। खासा संगीन चैलेंज है ये, 200 रन बनाना, फाइनल मैच, नॉकआउट का दबाव, ये आसान नहीं है। सारी नजरें इस वक्त फखर जमान पर हैं। सलमान जी बिल्कुल, फखर जमान वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैच विनर की हैसियत रखते हैं, किसी भी प्लेइंग 11 में खेल रहे हो, और पूरी काबिलियत है उनमें किसी भी टोटल को चेस डाउन करने की। यहाँ पर उनके साथ काफ़ी साथी भी ऐसे हैं जो बड़ी हिट मार सकते हैं और जिन्होंने इस टूर्नामेंट में ये कारनामे दिखाए हैं। लेकिन एक प्रेशर है, एक फाइनल मैच का एक अपना प्रेशर होता है, और अभी तक कभी कभार बड़े टोटल जो हैं वो आपको ये जहनी छूट ज़रूर दे देते हैं कि आप मारिए, जो होगा अब देखा जाएगा। जी हाँ, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बताइए यहाँ पर रन्स दोनों एंड से दरकार होंगे। अबरार इन फॉर्म है, जनूबी अफ्रीका में ये इनका सिक्का चलता रहा। अबरार फिटनेस के मसाइल से छुटकारा पाकर वापस गए थे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे, और वहाँ अपनी धाक बिठाकर आए हैं। और ये अच्छी गेंद थी, सवाल पूछा है लेकिन शायद बाउंस ज्यादा था। एग्रीमेंट हो गया बॉलर और अंपायर का, दोनों ने एक दूसरे को नोट किया। बिल्कुल ये गेंद बाहर जा रहा था, स्लो गेंद था, टर्न हो रहा था और स्टंप से बाहर जा रहा था, और बड़ा क्लियर कट डिसीजन। और फिर तेज रन, और यहाँ पर एक अच्छी अपील है और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं हारिस बहुत, और देखना होगा कि फैजान ने अपनी क्रीज तक रसाई हासिल की है या नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। हो सकता है कि जब तक विकेट कीपर ने कलेक्शन की है कि इनका बल्ला जो है ये पहुंच गया हो, क्योंकि खास से पूरे एतमाद हैं। फैजान यहाँ से लगता है कि अपनी क्रीज में पहुंच गए हैं, इसलिए इनको जो वीडियो स्क्रीन है वहां से भी अच्छी खबर मिलेगी फैजान को। जी हाँ, ये बहुत अच्छी टेक्निक है रनिंग की। बैट को ड्रैग किया उन्होंने बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा के फुल स्ट्रेच पे। अगर कोई यंगस्टर्स देख रहे हैं इसको, ऐसे अपना बैट ड्रैग करना चाहिए रनिंग करते वक्त। टाइट सिंगल्स में ज़रूरत पड़े तो डाइव भी कर सकते हैं आप। फैसल आफरीदी अपना फैसला सुनाने को हैं। जहां वो खुशखबरी यहाँ पर मिल गई है फैजान को। खासी तेज उनने दौड़ लगाई थी। पहली इनिंग्स में हमने देखा था तैयब ताहिर अच्छा दौड़ते रहे। ये दोनों फॉर्म में फैजान जो हैं, गो के पिछले चंद एक मैचेस में ये ज़्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन ये बड़े अच्छे स्ट्राइकर हैं। ये मैच का 5सा पहलू पलट सकते हैं। 5 ओवर्स के बाद 33 पर 1। अभी भी फ़खर और फैजान साथ साथ हैं। मोहम्मद अली कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे, उनकी उंगली पर चोट आई थी गेंद को रोकते हुए। पिछले मैच में इन्होंने 4 विकेटें हासिल की थी, इसलिए ये बड़ा अहम किरदार है। गेंद शायद जाकर लगी है उनकी गर्दन की जानिब, लेकिन उंगली पकड़े हुए हैं।
जाहिर है ये जब गेंद को रोकने के लिए इन्होंने डाइव किया है तो ज़मीन के साथ भी टकराए और गेंद आकर इनकी गर्दन से नीचे छाती के ऊपर लगा है। तो खैर थोड़ी सी ट्रीटमेंट मिलेगी। इंपॉर्टेंट बॉलर है, इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। आज भी एक विकेट ली है उन्होंने और 20 विकेटों की इनकी टैली है। और ये दूसरे जहांदाद जो कि बड़े इफेक्टिव रहे, इन्होंने भी विकेट्स ली हैं और बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर हैं और विकेट ही चाहिए इनको, तभी इनको तीसरा ओवर पावर प्ले के अंदर कराया जा रहा है। ये वाइड करार भाई, ज़रूरत होगी इधर उधर से मदद की यूएमटी मार्कोर्स को। ये 200 का हिंसा जो है, ये बहुत बड़ी चोटी इनको सर करनी है चैंपियन बनने के लिए। और ये ओवर जो है ये बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि 200 रन तक पहुंचने के लिए जब आप पीछा करते हैं तो आपको पावर प्ले में 50 के आसपास होना चाहिए। इनको ज़्यादा स्विंग करते हैं। अब डीप मिड विकेट को पीछे किया गया, डीप थर्ड को आगे बुला लिया गया। एक बार फिर नरम हाथों से खेला, झिझक के साथ भागे, इसलिए थ्रो जो है फैजान के एंड पे ही गई। जी हाँ, बिल्कुल भी पेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि बैटर पेस का इस्तेमाल कर सकें। स्लोअर बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ और फ़खर जमान क्योंकि इस किस्म की लेंथ को भी छक्का मारने की उनकी महारत है तो वो फ़ौरन उन्होंने रन लिया। बिकॉज जो फील्ड सेटिंग उनके सामने है इसमें लगता यही है कि अब ये ज़्यादा मिक्स करेंगे अपनी पेस को और बैटर को गैस करवाएंगे। 2 मिस्ट्री स्पिनर्स भी इस मैच में हैं और उनके ख़िलाफ़ मिडिल में बड़े स्ट्रोक बार बार लगाना शायद इतना आसान ना हो। तो फ़खर चाहेंगे कि इस पावर प्ले को एक बड़े नोट के ऊपर ख़त्म किया जाए। 5 गेंदें अभी बाकी हैं। एलाइड बैंक स्टैलियंस का बॉलिंग अटैक खासा मजबूत है जिसमें 2 मिस्ट्री स्पिनर हैं। हारिस रऊफ हैं दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स में से एक, इसलिए पेसर को यहां पर निशाना बनाना होगा। वही कर दिखाया फ़खर जमान ने, इसे मारपीट दिया उन्होंने वाइड ऑफ मिड ऑन। जी हाँ, इसीलिए वो रन इन्होंने इस तेज़ी से लिया क्योंकि उन्हें मालूम है कि बहुत ज़रूरी इस पावर प्ले में इम्पैक्ट डालना। और अभी इसकी 5 गेंदें बाकी हैं और अगर वो 3 को भी बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं तो ये पावर प्ले काफ़ी मानी खेज हो जाएगा और एक मोमेंटम के साथ वो अगले ओवर्स में शामिल होंगे। बहुत सारी जो चांसेस हैं मार्कोर्स के वो फ़खर के क्रीज पे रहने से जुड़े हैं। ये अच्छा गेंद है, बहुत ही आहिस्ता गेंद करवाया कि कोई चांस नहीं। फ़खर पहले ही ओपन कर चुके थे अपनी फ्रंट लेग को और ऐसे में जोर नहीं पड़ सकता था इस लाइन और लेंथ के ऊपर। यहाँ क्योंकि उनका ये सारा वजन था वो ऑन साइड की जानिब था, ऑफ साइड में एक भी फील्डर बाउंड्री पर नहीं है। लेकिन देखना ये कि फ़खर जमान क्या एक तरफा ही खेलते हुए नजर आएंगे या ऑफ साइड में हमलावर होंगे। लेकिन लेग साइड उनको पसंद है। यासिर ने जो सेंचुरी स्कोर की, उनके तकरीबन 3/4 रन जो हैं लेग साइड में आए। इसमें आप समझते हैं कि बॉलिंग और लाइन का भी अमल दखल था? बिलाशुबा था क्योंकि यासिर एक ऐसे प्लेयर हैं जो प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेलते हैं। तो जहाँ जहाँ उन्हें गेंदें मिलती गई उसके हिसाब से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले। उन्होंने कवर में भी छक्का लगाया, उन्होंने सीधा सामने भी खेला और ऑफ स्टंप के बाहर से बड़े खूबसूरत कुछ फ्लिक भी मारे। तो आज तो उनका दिन था। यासिर ने बहुत शानदार इनिंग खेली और बड़ा मिनिमम रिस्क वाले शॉट खेले उन्होंने। बैक ऑफ द हैंड आहिस्ता गेंद थी, फैजान उनके जाल में नहीं आए। सलमान, कहा जाता है 50 ओवर के क्रिकेट में कि अगर पहले बैटिंग करते हुए एक बल्लेबाज सेंचुरी बनाता है बड़े स्कोर में तो दूसरी टीम को रन चेज करना उसी सूरत में मुकम्मल हो आप कर सकते हैं। अगर सेंचुरी का जवाब सेंचुरी से दें तो ये यहाँ पर भी वैसा ही जवाब चाहिए। देखिए, किसी ना किसी को तो बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी क्योंकि जब आप छोटा छोटा करके आउट होते हैं तो एट टाइम मोमेंटम टीम का ख़राब हो सकता है। तो
अच्छा यही है कि एक ही लंबा खेल जाए, लेकिन इस क्रिकेट में कोई आकर इतना वक्त लेता भी नहीं है। एक बार फिर, और ये बड़ी विकेट है। एक दफा बहुत आला स्लोअर बॉल दोबारा, और फखर को पूरी तरह डिसीव किया जांदात ने, और ये दूसरी बार है इन्होंने क्लीन बोल्ड किया फखर को इस टूर्नामेंट के अंदर। यहाँ क्रीज में खासा डीप थे और तलपट कर दिया उनकी स्टंप्स को बिल्कुल। फखर जमान के जितने भी परस्तार हैं उनको मायूसी हुई। इस बार इन बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी की फुल लेंथ आई। दाद देनी पड़ेगी आपको इस बॉलिंग की और इस बॉलिंग चेंज की, कप्तानी की भी, क्योंकि ये वो विकेट था जिसको लेने के लिए इनको वापस लाया गया था, वरना अमूमन ये पावर प्ले में 3 ओवर नहीं करते। तो दिलेरी की कप्तान ने, और जहां पर ये होती है फिर किस्मत भी उसी तरफ जाती है। फखर जमान 20 रन बनाए और 6 ओवर्स में 41 पे 2। अबरार अहमद जो कि लेग स्पिनर हैं, लेकिन ज़्यादा जो जादू है ये अपनी उंगलियों का दिखाते हैं। गुगली भी जो है वो उंगलियों की ही मदद से ज़्यादा करते हैं, रिस्ट का इस्तेमाल इन्हें कम करते हुए देखा जाता है। जी हाँ, ये फिंगर बॉलिंग है और मिस्ट्री बॉलिंग जो है ये टेप बॉल से निकली है, फिंगर्स का इस्तेमाल, और अगर इसको सीधा करवाया जाए तो ये गेंद बाहर निकलता है, और अगर इसको लेग स्पिन की तरह फेंका जाए तो ये गेंद गुगली होता है। और हम कोशिश करेंगे अगर हमें एक बॉल मिले तो हम कैमरे के ऊपर दिखाएंगे किस तरह ये बॉल किस तरफ जाती है, लेकिन इसमें अक्सर बैटर्स को मालूम नहीं होता कि बॉल किस तरफ जाएगी, इसीलिए वो उन्हें शॉट को डिले करना पड़ता है। और ये वो विकेट है जो कि शायद इस मैच का सबसे बड़ा विकेट साबित हो। अक्रॉस द लाइन खेल गए, इस तरह लेंथ और लेंथ पर ही मात खाई। बड़ी अच्छी विकेट। जहांदाद को यकीनी तौर पर तमानियत हुई होगी जब आप इतने बड़े बैट्समैन का शिकार करते हैं तो फिर आपका जो हौसला है वो और ज़्यादा बुलंद होता है। हमलावर हुए, ये नहायत जोरदार, और गेंद मीलों मील गई मिड विकेट के पार। इमरान रंधावा एक बार फिर अंदर आए हैं और आते ही पहले बॉल पे इन्होंने हमला किया है। इससे पहले भी एक मैच में आते साथ इन्होंने बड़े स्ट्रोक लगाए थे और एक हाई प्रेशर गेम के अंदर उस चेस में बड़ी मदद की थी अपनी टीम की, और यहाँ पर भी इसी किस्म की बारी लेने की जरूरत है। आज आते ही काम पर लग गए हैं। जय इमरान पिंच हिटर के किरदार में अभी तक जचते रहे हैं। पिछले 1-2 मैचेस में छुपे रुस्तम ये साबित हुए बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में। ये गेंद अच्छा था, अबरार ने थोड़ा सा पेस को और स्लो किया और बैटर को टेस्ट किया। ये बॉल थोड़ा फुल था, उनकी रेंज में था और पेस भी थी इसके ऊपर, इसलिए कनेक्शन इतना अच्छा हुआ। लेकिन इससे अगला बॉल थोड़ी और कम पेस से था। ये देखिए यहाँ पर फील्डिंग हमने देखा कि आज यूएमटी मार्कोर्स की अप टू द मार्क नहीं थी और अच्छी फील्डिंग भी इस मैच में फर्क डालेगी। अबरार यहाँ टेस्ट मैच खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ और बाद अज़ां इंग्लैंड के खिलाफ इन्हें मैदान में उतारा गया था मुल्तान में। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बॉलर लग रहे थे। तो क्या वाइट बॉल में इनकी कामयाबी का राज ये है कि बल्लेबाजों को इनको जांचने का, जान लेने का वक्त कम मिलता है? ये सवाल हम रखेंगे सलमान के सामने अगले ओवर में 7 के बाद 50 है इसको। ये पावर प्ले के मनाजिर हैं जिनमें अच्छा स्टार्ट शुरू में होने लगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि
काफ़ी अच्छी बॉलिंग मेथड था इसमें, कैचिंग भी अच्छी हमने देखी, फील्ड प्लेसिंग के मुताबिक बॉलिंग देखी और उतना खुल के खेलने नहीं दिया। कुछ अच्छे शॉट ज़रूर थे, ये बहुत खूबसूरत स्ट्रेट छक्का था, फ़खर जमान का ही शॉट बहुत बड़ा शॉट था, मिड विकेट का छक्का, लेकिन उसके बाद चेंज ऑफ पेस जब से आया तो फिर बैटर्स को इश्यूज़ हुए और फिर विकेट्स गिरी और मसाइल बढ़े और पावर प्ले जो इख्तिताम पजीर हो। ये जो तालियां और जोशो खरोश है ये हारिस रऊफ के लिए, जो इन दिनों अपनी फॉर्म बहाल कर चुके हैं। उनकी पहली गेंद पर मिस फील्डिंग की बदौलत 2 रन बने। आज बहुत कम फील्डर्स ऐसे हैं जो कि बॉलर के लिए तमानियत का बाइस बने हों। जी हाँ, आज फील्डिंग से कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं बॉलर्स के लिए और ये सीधा टामक टोइयों की ज़्यादा खबरें नहीं। शायद फाइनल का प्रेशर है, आज क्राउड भी ज़्यादा है या शायद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना चाह रहे हैं। ये बड़ा शॉट है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर और 4 रन होंगे एक ठप्पे के बाद। ये बुरा बॉल था और बहुत अच्छे तरीके से फैजान ने इसका फायदा उठाया। जहां एक खुली छुट्टी मिल गई फैजान को ऑफ स्टंप के बाहर और ऑफ साइड की बाउंड्री पर सिर्फ एक ही रखवाला था, महज उससे दूर खेलना था। आखिर में ये थपड़ा दिया गया। इस बार रन नहीं मिल सकेगा, फैजान इससे पहले रन आउट हो चुके हैं। शोएब मलिक ने आज भी बड़ी शानदार रनिंग की बिटवीन द विकेट और फील्ड में भी तेज़ नज़र आ रहे हैं और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा आपको ये हॉट स्पॉट्स में फील्डिंग करते नज़र आएंगे। फैजान ने एक बारी इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार ली है और इनकी कोशिश होगी कि उसको आज दोहराया जाए। ये अच्छा गेंद, कोई रूम नहीं बैटर के लिए, हार्ड लेंथ के ऊपर और यही हारिस की स्ट्रेंथ है और इस पिच पे मार्जिन बड़ा कम है बॉलर्स के लिए। आज की जो पिच है इसे स्पेशली और बेहतर करने की कोशिश की गई है बैटिंग के लिए और उसके नताइज हमारे सामने हैं। यहाँ पर थिंक टैंक, सिलेक्टर्स, डायरेक्टर एकेडमीज, जीएम डोमेस्टिक सभी बैठे इस मैच को देख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान शाहीन की नामजदगी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक सहरोज़ा मैच उसका एहतमाम किया गया रावलपिंडी में। वेस्ट इंडीज़ की टीम सबसे पहले यहीं आएगी। बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और बहुत फाइन गई, तेज गाम, 4 रन का और इजाफा। ये अच्छा ओवर डबल फिगर में आ गया हारिस रऊफ का। ये हारिस की पेस है, थोड़ा सा फील्डर के दाएं या बाएं गेंद अगर जाएगा थर्ड पोजीशन या फाइन पे तो मुश्किल होगी। ये देखिए एक अच्छा गेंद था और बैटर जो है उनका ये एज लगा है, कन्विंसिंग शॉट नहीं था लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर सिर्फ अपनी पेस की वजह से। अब थोड़ा सा फाइन आ गए हैं थर्ड के फील्डर बाउंड्री पर, पहले थोड़ा बाहर थे इससे, लेकिन अपनी लाइन और लेंथ को इन्हें टाइट रखना पड़ेगा इस फील्डिंग के साथ। और शॉट लाजवाब, काबिल दीद, ये देखने की चीज थी, बिल्कुल एफर्टलेस। फैजान उन्होंने इस ओवर में छक्के छुड़ा दिए, 66 पर 2। Lovely crowd, and you have to say that it's been amazing. They've been very loud. They've been cheering for everyone. They've been good supporters of cricket. Usman Tariq. और अंदावा
He's hit it straight to the fielder, who makes no mistake. That's Yasir Khan, the fielder, and then the very first delivery, Usman Tariq is struck. This is Yasir Khan's night. He was there at the right place at the right time. Randhawa had to go for it. That required run rate is climbing. But Usman Tariq made an immediate impact. Randhawa, who's been the floater in the order, just high on the bat and just went up rather than far. Yasir initially seemed to have misjudged it, but like I said, he can't do anything wrong tonight. As Randhawa walks back for 7, UMT Markhors 66 for 3. Shah Faisal, if there was a need of a captain's knock ever, this is the time. 147 runs, 116 the strike rate. Just this tournament, Barrier Town Champions Cup T20. It's a very quiet tournament by his very own high standards. So, yep, you're absolutely right, Ali. There's the man. The stage is set. And if anything can do it for UMT Markhors, Iftikhar can. Cuts well, just for one. The trouble is, they've got so many X factors. ABL Stallions, Abrar Emil 2 for 13, Haris Rauf, expensive first over, 16 runs. But this is what Randhawa did. He had to do it. He had to go big. Just heaved it straight to the fielder. Good bowling, good bowling. Well, you could hear Haris from behind the stumps. He said he's okay with that delivery for Faizan. Because Faizan is looking for that cow corner. Well, Oh, it's too difficult. It's too hard to get him away. That pause makes life so tough, and then that spin doesn't get any easier. Just one run of 5 deliveries. This is not going to work. Singles won't harm. Allied Bank Stallions, 9 overs done, 68 for 3. Grandstand is pretty well occupied today. Crowds in all enclosures. Familiar faces. Pakistan women's all-rounder Alia Riaz sharing a moment with our colleague Marina Iqbal, former Pakistan international. Yeah, intense conversation, that one. Former selector Marina Iqbal. I was going to say final the other day. They're talking about something related to women's cricket, or maybe just planning a dinner after the game. Who knows? For his second over, Haris Rauf. Yeah, they've just not been able to find enough gaps. They've forced few hits, but that ability to find the gap, that is missing. Iftikhar, we know what he can do. Faizan's role was important right now because after Fakhr's departure, Faizan has played 21 deliveries, 30 runs. He's able to shift gears right now, allow Iftikhar a little bit of time and build a partnership. Both these two are very capable, but it's over to Iftikhar now, although he's new. Doesn't have a lot of balls on his disposal.
And Haris Rauf not being an easy customer at all. And the trouble also is which bowler to target. That's a huge question, because there's so much quality in that bowling unit. Muhammad Ali, Abrar, Haris, Usman, Jandad Khan, they keep coming at you, so you're really not finding that weak point, weak spot in the bowling of Allied Bank. Yeah, good point. It's a very strong bowling lineup. But sometimes when you're faced with situation like this, it gives you the clarity. Just see ball, hit ball, regardless of who is bowling. Although in the last over, Faizan wasn't picking Usman Tariq. And Usman had found good lines against Faizan and taking the ball away from his hitting arc as well. That will be a challenge. It has been a challenge from very first delivery of the game for UMT Markhors when they were hit for a 6, the very first delivery of the final. And since then, they've been catching up. And now they're in a position where they really cannot decide which way to actually do they go after bowling right now. Do they let that required run rate creep up to 14 or 15, then start hitting? Because at the moment it's 12.39. Remember, the current run rate is 7.45. So do they wait another couple of overs? That's a huge question. I have a feeling the sooner Iftikhar gets away a first boundary or first big shot, they'll gain some momentum. They need that momentum to come real quick. But at the moment, Faizan, who's set, is also just getting runs in singles. The run rate that just a while ago was just above 11, now it's gone to 12.5. And it will happen if boundaries don't come. Absolutely. 12.49 can quickly be 14 or 15 if you keep a couple of overs, quiet overs. Maybe it's Faizan. If Iftikhar can, can play this manner for another over, but it has to be Faizan to go after bowling on every delivery. Simple. 10 done, 73 for 3. Yeah, it's good time, halfway through the second inning, for all the officials and the players to have a drink break.
Right, Faisal, 10 overs, 73 for 3. What would be the message from Misbah-ul Haq to the batters? Well, the message is very clear because the equation is right in front of them. They can take heart from is that at the halfway stage, Allied Bank Stallions were 85. So they're not really very far behind at this stage. A couple of big hits and they could be even Steven. The problem is though, Allied Bank Stallions has gone on and done it. They have to do it. This one is in the gap and the boundary. Breaks the shackles. Faizan breaks the strings of single scores as well. That is a much needed boundary. Yeah, he waited enough. Look, waited, and then hit it in the gap. That's one way of playing Usman Tariq. Wait enough, and then find the gap. Such an important inning for Faizan. Oh, how beautiful. How do you play these? He's bowling the leg spinners, the ball that is leaving Faizan. So Faizan was looking to go right across and line him up. And then he bowled in the wide off spinner. Clever. Even Haris didn't have a clue. A little bit of a break, concussion check. It hit him flush on the visor, I think. And it did take the glove on the way. That was very well bowled. How do you play that? Very tough. Doesn't get any tougher than this at this level. Right, Barrier Town Properties. Barrier Town goes global. Barrier Town Properties to develop a world-class gated community in Dubai South. Superb initiative. 123 of 56. Yeah, they're not finding those boundaries. Singles won't hurt them. They're happy giving away singles. Just the one boundary in this over now. If the Khar pressure's building on him, although he's only played 4 deliveries, but like I said, if the boundaries don't flow from the other end, both the batters will feel pressure. What can Iftikhar do? Nah, nothing. 11 done, 78 for 3. Right, they keep coming at you. The mystery bowlers. Abrar now to bowl. Uh-oh. Just not working. Nothing has worked for UMT Markhors. From behind the stumps, you must have heard Haris urging Abrar to come and bowl the first delivery because there is that 60-second window these days. You have to start the next over within that 60 seconds. Otherwise, you get a warning and then a penalty. Right, here's a big one. Very big one. That's what they've been waiting for. UMT Markhors. Faizan moves to 43 with that huge 6. He was eyeing that stroke against Usman, but this time it was in the arc. Full enough for him to go through. Long levers got underneath it, and it soared high and far. I think the plan is quite clear from Faizan that he's going to go after any delivery that comes his way. But the plan is quite clear from the Stallions as well, to keep the ball away from his hitting arc. Abrar correcting his mistake that he made on this delivery, on the very next one. And now, Faizan got frustrated. He's looking to pierce that offside field now. He hits it straight to the fielder. Despite the 6, it's still a good over.
Oh no, that should be simple for Harris. Yes, it indeed. Faizan goes looking for that glory, looking for those big ones. Not getting that elevation or the force behind it. Yeah, Faizan was struggling really hard to line up both these mystery spinners. And now Abrar picks up the reward. Trying to bowl away from his hitting arc, trying to bowl the away spinners, making him hit against the turn, and it went straight up. Harris would catch them in his sleep. Faizan tried hard, gone for 43. UMT Markhors 84 for 4. Right, another youngster who's been talk of a town. Saad Masood, 157 runs with the strike rate of 149. He said he's making his name for himself with few cameos that he's played. But this is a very important inning as far as he's concerned. 12 done, UMT Markhors 84 for 4. ज़्यादा दूर नहीं थी हवा में, और उसके बाद हुसैन के हाथों से अभी तक जो 5 बॉलर्स का इस्तेमाल किया गया है सभी कारगर रहे हैं, और हाथ से गेंद को रीड करने में बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ इफ्तिखार अहमद एंड कंपनी को इस इनिंग के दौरान मिस्ट्री स्पिनर की। बहुत ज़्यादा वैरायटी है उस्मान के पास, और उसका जवाब नज़र आया नहीं। हालांकि यूएमटी मार्कोर्स की टीम स्पिनर को अच्छा खेलने के लिए जानी जाती है। फिर से पुल शॉट, एक ही रन ले सकेंगे इफ्तिखार अहमद। और ये ऐसा मैच रहा है जिसमें ये पहली गेंद से ही ये पिछले कदम पर रही है यूएमटी मार्कोर्स, और ये जो सहारा बनकर मैदान में मौजूद थे मोहम्मद फैज़ान, इनके आउट होने के बाद ये और ज़्यादा मंझधार में चले गए। देखना ये कि साथ जो हैं इस दबाव और फाइनल का कैसे सामना करते हैं। आज बॉलिंग नहीं मिली इन्हें। यूएमटी मार्कोस की अगर आप मोमेंटम और बॉडी लैंग्वेज की बात करें, कॉन्फिडेंस उसका जब वो फील्डिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, तभी लो होना शुरू हो गया था, और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है जब आप बैटिंग के लिए आते हैं। टोटल बहुत बड़ा लग चुका है, ये शायद यहाँ देखना ये कि गेंद ज़मीन पर पहले लगी थी, ये कैच की अपील हुई है और टीवी अंपायर से इस्तिफसार हुआ है। उसके बाद क्योंकि अपील करते हुए ज़्यादा पुरजोश नहीं थे यहाँ पर कप्तान विकेटों के पीछे। आज बहुत ही मुश्किल सवाल किए हैं उस्मान तारिक ने। गेंद खासी बुलंदी से छोड़ते हैं, गेंद बूट पर लगी, क्या ये बम बॉल था? अंपायर वही देखना चाह रहे हैं। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे और यहां से तो ऐसा लगता है गेंद जमीन को नहीं लगी, और अगर मैदान पर
अंपायर का ख्याल है कि बल्ला टकराया था, जो कि लगा था नेकेड आइज से, तो फिर इनको जाना होगा। बिल्कुल डिफ्लेक्ट हुआ है बूट के ऊपर से, एज तो लगा है, जो डायरेक्शन अगर आप बॉल की देखें तो बल्ले को लग के बूट पे डिफ्लेक्ट हुआ है और वहां से फिर बाउंस हुआ है। यही सवाल है और यही इशारा किया है हारिस ने भी। यहाँ अच्छी खबर नहीं मिलने वाली, वही हुआ। साद मसूद इस मैच में आज इनको एक भी गेंद करने को नहीं मिली और बैटिंग में ये दूसरी ही गेंद पर आउट हुए। मिस्ट्री स्पिन की बिल्कुल ताब नहीं ला सके। दूसरा शिकार हो गया उस्मान तारिक का 85 पर 5। रिवर्स अटेम्प्ट किया था, नजरें हटा ली थी, इनसाइड है जो कि बूट से डिफ्लेक्ट हुआ और कैच किया हारिस ने। यूएमटी मार्कोर्स अब ट्रैक खो चुके हैं बगैर किसी स्कोर के साथ वापस। यूएमटी मार्कोर्स 85 पे 5। ये दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, इनके तकरीबन 6 ओवर्स हुआ चाहते हैं। 27 रन देकर 3 विकेटें ले चुके हैं। उस्मान ज्यादा कामयाब रहे हैं और इनकी गेंद जो है वो हर बार एक पहली साबित हुई है। समद ने धकेला इससे पीछे, एक और कामयाब ओवर 85 पर 5। अबरार अहमद अपना आखिरी ओवर उनने वाइड से शुरू किया। अंपायर की जानिब देखा था इस सवाल के साथ कि क्या वाकई वाइड गेंद थी। पुल शॉट खेला, यहाँ पर रन आएंगे और ये 4 रोकने में कामयाब रहे और रन आउट। जी हाँ, दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पर और इस तरह वो टामक टोइयां हम पहले हाफ से देखते हुए आ रहे हैं यूएमटी मार्कोर्स की। तो फील्डिंग के बाद बैटिंग में भी उसकी झलक है। एलाइड बैंक स्टैलियंस ने आज एक भी कदम गलत नहीं रखा। टॉस से लेके अभी तक की जो फील्डिंग रही है लाजवाब रही है। जितना हमें डिटेरिएट करते हुए यूएमटी मार्कोर नजर आए फील्डिंग में, उतना ही स्टैंडर्ड ऑपोजिट था एलाइड बैंक स्टैलियंस का। लाजवाब फील्डिंग, बाउंड्री पे चेक जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरह की फुर्ती दिखाई है मेरा नहीं ख्याल कि ये बाउंड्री होगी, रन आउट जरूर होगा। यह शॉट बहुत तेज था, शायद इफ्तिखार अहमद को गुमान था कि 4 रन हो जाएंगे और क्योंकि इनको मुश्किल हो रही थी इफ्तिखार अहमद को मिस्ट्री स्पिन को समझने में, इसलिए भी ये वापस नहीं गए। और ये कमाल फील्डिंग, ये विकेट जो है ये हारिस रऊफ से ही मंसूब होनी चाहिए और इनको तो डेंजर एंड पर भी नहीं जाना था। ये रन मौजूद था, इफ्तिखार अहमद ने ये खुद गलती की है। कुछ समद आधी विकेट से भी आगे आ चुके थे और उनका ये एंड बन रहा था। आप एक्सपेक्ट जरूर करते हैं हारिस रऊफ जिस तरह के एथलीट हैं, उनसे आप ऐसी फील्डिंग कोई गैर अनएक्सपेक्टेड नहीं है और बिल्कुल भी सर उठाने का मौका नहीं दे रहे यूएमटी मार्कोर्स को इस बार। यहाँ इफ्तिखार अहमद को यहाँ हारिस रऊफ की गेंद जो है जब उनके हाथ लग गई थी तो इनको वापस जाना चाहिए था, क्योंकि डेंजर एंड पर अब्दुल समद आ रहे थे, लेकिन आज इनका बिल्कुल नहीं दिन था। 87 पर 6।
ये बैरियर टाउन चैंपियंस T20 कप का फाइनल एक तरफा हो गया है और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, एक टिपे पर गेंद पहुंची अली के पास। बहुत कम ऐसे फाइनल्स या नॉकआउट मैचेस होते हैं मरीना जहां पहली गेंद पर ही एक टीम का दबदबा हो जाए और दूसरी जो है उसके करीब भी नहीं आ सके। ये वो रन आउट, शानदार एफर्ट थी हारिस रऊफ की बाउंड्री पे, बहुत जल्दी रिकवर किया और थ्रो भी बहुत एक्यूरेट थी। ये जोरदार शॉट खेला, इस बार सारी कुव्वत झोंक दी इफ्तिखार अहमद ने, इसलिए गेंद पहुंच गई आनी जंगले के पास और ऐसे कई और शॉट लगाना होंगे। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, विकेट्स गिरती जा रही हैं, रन्स और बॉल्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ये इनके जोन में आ गई थी इफ्तिखार। विकेट के सामने है या फिर गेंद छोड़ जाती लेग स्टंप को, ये तो मैदान को भी छोड़ गई और अंपायर के मुताबिक ये बल्ले के रन से इफ्तिखार अहमद ने पिछली 2 गेंदों में अब 10 रन बना लिए। लगी रहे कि बल्ले पे लगा क्योंकि बहुत ही डेंजरस पोजीशन में आ गए थे विकेटों के सामने। थोड़ा सा लेग साइड से भी नीचे गेंद जा रहा था इब्रार का। UMT मारखोर हर तरह की मुश्किल में है इस वक्त। ये वाइड गेंद बहुत अच्छा फैसला था अंपायर आसिफ याकूब का, क्योंकि बहुत 19-20 मामला था, इसलिए ये पाकिस्तान के बेहतरीन अंपायर्स में से एक हैं आसिफ। हाथ लग गया था, अफरा तफरी से एक नजर आ रही है बैटिंग में, फील्डिंग में। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं वहाब रियाज और अजहर अली नेशनल सेलेक्टर, शफीक। सेंचुरी जो है उस तक UMT मार्कोर्स ने आज एक ही इन्होंने संगे में अबूर किया है दिन भर, 14 ओवर्स के बाद 101 पर 6। अभी तकरीबन हदफ के निस्फ तक रसाई हुई है मार्कोर्स की, 6 ओवर्स बाकी रह गए हैं और जिस वक्त अपनी सेंचुरी स्टैलियंस ने मुकम्मल की थी वो 12वां ओवर था और उनकी सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी। इनकी विकेटें जो हैं ये भी दुगनी गई हैं। क्या समझती फाइनल का जो दबाव है उस किताब नहीं ला सकी मार्कोर, या फिर शुरू से जो हमला कर दिया था, पहली गेंद पर छक्का लगा था मोहम्मद नवाज को और 19 रन आए, फिर वहीं से ये टीम दबी चली गई। देखिए फाइनल का प्रेशर दोनों टीम्स पे होता है और जो पहले ओवर की आप बात करें उसके बाद 19 ओवर पड़े थे। अगर आप पहले ही ओवर में दबाव में आ जाएंगे तो बाकी 19 ओवर आप कैसे खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है जो प्लानिंग थी और उसकी एग्जीक्यूशन थी वो अच्छी नहीं हो सकी। इनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार रहा स्पिनर्स पे विद इन पावर प्ले। वो अगर आप थ्रू आउट टूर्नामेंट देखें तो वहाँ पावर प्ले में ये रन स्पिनर्स की वजह से देते आ रहे हैं, ट्रस्ट ज़्यादा नहीं किया। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में भी मेरा ख्याल है जैसे समद को भेजा बहुत लेट और बॉलिंग भी अच्छी की लाइट बैंक स्टाइलियंस ने, लेकिन दोनों टीम्स का डिफरेंस बाउंड्रीज का तो था, स्ट्राइक रोटेशन का बहुत बड़ा फैक्टर था जो UMT मार्कोर की तरफ से नज़र नहीं आया।
जी हाँ, ये ऐसी टीम नहीं थी जो इनके सामने नाकाबिल शिकस्त हो। ये स्टैलियंस को एक मैच हरा चुके थे इससे पहले 3 रन से, जो लीग का दूसरा मैच खेला गया था यहीं पिंडी स्टेडियम में पिछले हफ्ते। लेकिन ये बड़ा धचका है, इससे पहले फैसलाबाद का फाइनल, वहां पर इनको शिकस्त हुई, वो भी एक तरफा फाइनल था। तो ये फाइनल हारने की ये एक रिवायत जो है, लगता है कि यूएमटी मार्कोर्स जो है उसमें रिसीविंग एंड पर आ रही। रिकवर नहीं कर पाए जहां तक बॉलिंग की बात थी, बुरी फील्डिंग की बात थी, और अब बैटिंग की। एक सिंगल्स के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ। 15 के बाद 103 पे 6 यूएमटी मार्कोर। यहाँ बिल्कुल ये शुरू से ही आप देख सकते हैं, ये जो यूएमटी मार्कोर की लकीर है ये नीचे रही है और छू नहीं सकी किसी भी वक्त, और उसकी वजह ये जो दाग लगे हुए हैं, ये इनिंग्स जो है दागदार रही है दूसरे ओवर से लेकर अभी तक। और मिसबाउल हक को इनके साथ मोहम्मद सलमान हैं जो असिस्टेंट कोचेस में से एक हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर। मिसबा को बड़े फाइनल्स जो हैं ये अपनी कप्तानी में जीतने का है तजुर्बा, डोमेस्टिक फाइनल्स, इंटरनेशनल फाइनल्स, एशिया कप पाकिस्तान ने इनकी क़यादत में जीता था। पुल शॉट खेला इफ्तिखार अहमद ने, अच्छा आगाज किया इस ओवर का, और जब आपको औसत तकरीबन 20 की चाहिए है तो आपको ऐसे टूट पड़ना चाहिए। लाइन और लेंथ ऐसी मिल गई थी कि ये डेफिनेट बाउंड्री ऑप्शन थी, जल्दी पिक कर लिया था, ज़्यादा इनसार करते फिंगर्स को क्रॉस किया था मोहम्मद अली ने। चेंज ऑफ पेस था लेकिन लाइन नहीं सही थी। एक और चीज़ भी देखी जा सकती है यूएमटी मार्कोर्स के, अगर इस पूरे टूर्नामेंट में देखें तो एज सच थ्रेटनिंग कंडीशन में आए नहीं, जीतते रहे हैं, लेकिन इनकी जो गलतियां होती रही बैटिंग और बॉलिंग में वो जीत की वजह से कवर भी होती रही है। बिल्कुल बजा, अच्छा यॉर्कर। मोहम्मद अली ने 4 विकेटें हासिल की थी आखिरी बार जब वो खेले थे, इनकी मिडिल ऑर्डर का उनने सफाया किया, लेकिन आज सही मानों में उस्मान तारिक वो बॉलर थे जिनने मिडिल ऑर्डर को आज बिल्कुल मोम कर दिया। आकर 4 ओवर्स किए, 10 रन, 2 विकेटें, और ये एक ऐसा सहर अंगेज स्पेल था जिसका ख्वाब देख सकता है खिलाड़ी फाइनल के अंदर। आज बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ख्वाब पूरे हुए हैं। यासिर खान की बात करें, एक मौका मिला, उसके बाद उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की, और बॉलिंग में उस्मान तारिक की जैसे आपने बात की। और उसकी वजह ये भी है कि उनके साथ जो बॉलर्स दूसरे एंड पे बॉलिंग करते रहे उन्होंने भी काफ़ी हद तक जो रन्स, स्कोरिंग रन्स है उसको अंडर कंट्रोल रखा। इस पूरे बॉलिंग लाइनअप में आपको कोई वीक लिंक नज़र नहीं आता जिसको यूएमटी मार्कोर एक्सप्लॉइट कर सकता था। ये आप देख सकते हैं इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज है, ये तस्वीरें जो हैं ये खुद ब खुद, वो कहते हैं कि एक जो तस्वीर होती है 1000 अल्फाज पर भारी होती है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त किस टीम का बदला भारी है और कौन सी टीम पेशकदमी कर रही है ट्रॉफी की जानिब। और ये गए लंबे सफर पर निकले थे लेकिन रास्ते में हाथ लग जाएंगे हारिस रऊफ को, जो सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं लॉन्ग ऑन पर। अच्छा हाई कैच उन्होंने लिया। मोहम्मद अली जाने जाते हैं कि जब भी इन्हें बॉलिंग की जिम्मेदारी दी जाती है ये वो ओवर विकेट से खाली जाने नहीं देते, चाहे वो नया बॉल हो। डेथ बॉलिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप की है। आप देख सकते हैं बैक ऑफ द हैंड ये डिलीवरी थी, पेस नहीं दी थी,
और बहुत ज़ोर लगाना पड़ा था इफ्तिखार को, लेकिन फासला हासिल नहीं कर पाए। एक और आसान कैच हारिस रऊफ का, और इसके साथ ही यूएमटी मार्कोर की उम्मीदें जो है वो ढलती हुई। इफ्तिखार अहमद स्किपर की वापसी 22 रन पे, 7 खिलाड़ी डाउन 109 पे। अब ऐसा लगता है कि सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होना बाकी है, क्योंकि 21 रन की औसत चाहिए। यहाँ पर निसार और नवाज, इनके दो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं ये मैदान में। बॉलिंग में आज इनका बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं गुजरा दोनों का, इसलिए बैटिंग में भी खातिर खा उम्मीद इनसे रख नहीं सकते। और ये वो इनाम है, बड़ा इनाम जो आज की शाम मिलेगा, ये खूबसूरत सुनहरी ट्रॉफी, जिस पर तकरीबन एक हाथ आ चुका है मोहम्मद हारिस का। इसके अलावा एक बड़ी इनामी रकम है 1.5 करोड़ की। और स्टैलियंस एक बार फिर T20 के चैंपियन होने के बहुत करीब हैं। बहुत सालों बाद ये नाम जो है ये विक्ट्री स्टैंड पर आपको नजर आएगा। निसार बाल बाल बचे, उनकी स्टंप्स नजर आ रही थी सामने से, इसलिए LBW आउट देना आसान नहीं था अंपायर के लिए। 109 पर 7। Well, this is a sorry sight for UMT Markhors. It seems as if they're out of the races. Stunning batting display from Allied Bank Stallions, and the run chase never got going. Faizan fought hard, Fakhr scratched around, so did Iftikhar. It's between Nawaz and Nisar. This real sad story started for Markhors when Nawaz, his first over, went for 19. If you want to go back, when Iftikhar lost the toss, and the latest one for them is when Iftikhar lost his wicket. Dejected looking skipper must have been wondering what went wrong. Well, quite a lot went wrong in that final. Haris Rauf returning to his hometown for this big final, and all smiles. Why not?
Yes, it's Well, we're back. We apologize for the little hiccup in power. You lost the pictures and voice. We truly do apologize for that. 8 wickets have fallen now for UMT Markhors. This match as a contest is a foregone conclusion, if I may say that. A high full toss. Nawaz has helped it along. Interesting to see if umpire would want to check this one for height. and he didn't run. He stays there in the hope of getting a no ball and a free hit, and fancies himself to go after the ball. Obviously, he's the batter among the two present at the crease. But what if there is no ball? It's ended up as being a dot. Swing and a miss. Another clever change of pace. How do you see the growth of Jahandad as a cricketer in the last 6 to 8 months? First we saw him in Faisalabad, then he went to the national team, and now coming back here, just making his presence felt. He's done well. He's swung the ball, he's picked up wickets, he's shown good presence of mind while adjusting to different batters. Bowling yorkers were required, and very nice changes of pace. Once again hitting the length when required to. So basically he's been accurate, and he has executed the plans, as 18 overs are now bowled, and it's 119 for 8 Markhors. Very happy camp, Allied Bank Stallions. And also not to forget, they topped the group, so they were the ones who qualified directly for the final by virtue of staying at the top of the pile. Change of pace, too wide from Muhammad Ali. Overall as a championship, Salman, what's been the high points in your opinion? Anything that in particular caught your eye? It's been a challenging place for the batters due to the weather, due to the conditions at this time of the year. They've been tested with some swing bowling. This is, remember, a T20 format where you're supposed to get better pitches, the best of them all, and you can easily swing through the line. But here, the techniques have been tested. Some swing off the pitch, and certainly this was also one of those testing moments for the batter. In the initial phases, the bounce also was there to go with some seam movement throughout. So yeah, it's been a game every day, and some days it's been 2 games. So I think a fantastic job done by the curators, the groundsmen. In the morning, they've been coming up early, removing that early snow because of the cold. The dew changes into snow, and they've done great work, hard work, and spent hours and hours preparing these conditions to make this tournament successful. And also the boys who have made a name for themselves come up at this stage of Champions Cup edition of T20 cricket. Little Saad doing well, getting himself recognized. Yasir making another 100 in this format, a very influential one in this game, in the big final. Then we saw Hassan Nawaz, how good he is against the shorter balls, against the quicker men. That is something which is rare in our country. And
talk about spinners, there was young Ramiz, who you can surely make out that he's a talent for the longer format. Champions don't show up, get everything they want. Well, champions don't show up to get everything they want. They show up to give everything they have. Golden words? I think it's Umaid Asif who's coming up with these quotes for Stallions. Yeah, anything that can provide inspiration, anything that can get the best out of you. And this is a good way of saying a lot in a short line or two. Dr. Umaid Asif. Well bowled. Muhammad Ali certainly has surprised people, including myself, the way he's bowled in this tournament. He's been wonderful. Here is Mr. Atat Arar, one of the ministers. On his one side is Mr. Wahab Riaz, tournament director for Champions editions of the Cup. On the other side are a couple of selectors, Mr. Azhar Ali and Asad Shafiq, and some important people from the Pakistan Cricket Board watching over this game. It's been a good tournament, and we've just mentioned a few names, and Usman Tariq obviously has been very influential in the Allied Bank Stallions journey. As this one is up in the air and Muhammad Ali is under it. Another one to his tally. Yes, it is. Another wicket goes down. He's been economical and also picking up wickets. Wonderful player he has been. Best of the lot for the fast bowlers for Stallions. A miserable day at the office and night for Nawaz has come to an end. Not his night with the ball, with the bat. When he came in, his job was almost impossible. Can't fault for him for the effort with the bat, but wasn't to be against the brilliance of Muhammad Ali. He's really come up with his variations, with his lengths and also cunning changes of pace. Nawaz gone for 15. UMT Markhors sinking deep, 124 for 9. It's Mohammad Imran Jr. to come out and the last man to bat, and the Titanic has almost sunk now. Just a little bit of it remaining to meet the depth of the ocean as this last wicket. Wow, had that been in the line of stumps, things would have been different. 19 gone. It's 124 for 9. Final 6 deliveries of the championship. Barrier Town Champions Cup T20. Muhammad Ali, look at those numbers. Not just the wickets. He's also on top of the pile amongst the top 5 wicket takers in terms of economy rate as well. Hussain Talat will write the final rights, and this is the winning moment. Abrar with the catch. Delightful smile on the face of Hussain Talat. And Allied Bank Stallions are cock-a-hoop. They have won the championship. The best team of the tournament. The deserved winners. The smiles and the emotions will just flow. A lot of hard work has come to this.
Champions play to win trophies, and Allied Bank Stallions have won this one. No problems there with the front foot, and no problems further even for Allied Bank Stallions, who've now become the champions of Bahria Town Champions Cup T20 2024-25. And the last catch has been completed neatly, as they have done all night, taken whatever has been in the air. And once again, Stallions end up being the T20 champions, as their history suggests. So many times they have done it in the past, and this team certainly played better cricket than anybody else, and in the end they are the deserving winners of this tournament. A lot of credit, a lot of praises. Mentor Shoaib Malik, the backroom staff, Mansoor Amjad, that gleeful smile on his face. So is Umad Asif in the backdrop, and the reserve players. A lot of hard work has gone into it, and I'm pretty sure every one of those squad members will be very, very proud. Spare a thought for UMT Markhors. They fought their heart out, but today wasn't to be their night. They came up short in everything. Credit to this bunch of lads under Shoaib Malik and Muhammad Haris. These are great scenes here at the Rawalpindi Cricket Stadium. A wonderful championship coming to an end with a victory for one of the most iconic brands of T20 cricket around the world, the Stallions. This time it's Allied Bank Stallions. They are victorious by 75 runs. That's the winning moment. It was just a matter of time anyway. Last over, 76 needed, but Hussain Talat
The chase didn't go as it was expected. Fakhr did try to launch, but he wasn't anywhere close to his best. He was scratchy and didn't find middle of the bat quite often. On the other end, the wickets just kept falling, with Nafe trying a fancy stroke which has gone straight to the hand. This one was big from Fakhr over mid-wicket, and then he was just cleaned up by Jandad for the second time in the tournament. Khazan just kept going with a few shots that were very big, and some neat strokes, cricketing shots as well. This one was a great hit straight over the head of the bowler Haris Rauf, and then came in the mystery bowler. Yeah, the wickets kept tumbling. No partnerships of any note. That middle order, lower order was blown away by the mystery spinners. Usman Tariq and Abrar, big hits were few and far between. Plenty of high balls, but not much result in terms of maximums. This was Haris once again, very innovative. Abrar was taken for a boundary by Faizan. Then this mix up. Look at that for fielding display, and then complete misunderstanding. Iftikhar, it's the 1-6 for him, and at that time it had got really desperate. Nawaz tried, but it was Muhammad Ali, tournament's leading wicket taker. Santalat fittingly takes the winning wicket to go with his stunning performances with the bat. The all-rounder from Lahore really was one of the star men for Allied Bank Stallions, and that victory dance, including Azam Khan, showed how delighted
Yes, from the very first delivery to the very last delivery of the tournament, it has been nothing but spectacular in Barrier Town Champions T20 Cup. And in the end, it was Allied Bank Stallions who beat UMT Markhors by 75 runs to be the champions. Fantastic win. And welcome to the post-match ceremony. And before we carry on behalf of PCB, we appreciate the hard work and dedication of everyone involved, that local administration, organizers, and all law enforcement agencies for throughout their support. Pakistan Cricket Board would like to thank its commercial partners for their invaluable support for making this event a success. That includes Barrier Town, Jazz, Allied Bank, and Trans Group. Also, not to forget the team sponsors that include Lake City, UMT, Allied Bank, Nurpur, and Angro. Congratulations to all the participants for their incredible effort and sportsmanship. Each match which showcased not only talent but also teamwork and resilience. Last but not the least, Pakistan Cricket Board would like to extend its gratitude towards the fan of the Barrier Town Champions Cup 2024 for their support throughout the tournament. Right, in the presentation party, on my left, we have Mr. Ataullah Tharar. He's Federal Minister of Information and Broadcasting. With him is Mr. Faisal Qureshi. He's Vice Chief Executive, Barrier Town. With him is Mr. Wahab Riaz, Director, Champion Events, PCB. Alongside him is Mr. Nadeem Khan, Director, High Performance, PCB. And with him is Mr. Junaid Zia, he's General Manager, Domestic Operations, PCB. Right, before we start off with match and tournament awards, we would request Mr. Ataullah Tharar to please step forward and say a few words of encouragement. Thank you very much. I think it's been a great display of cricket, and my heartfelt commendations to the Stallions. They put up a great display. And Mr. Shoaib Malik and his team, you know, he's an evergreen captain. We've always been seeing him since decades. So very well played and very well done. A grand total on the board and defended very well. To the runner-up, there's always a next time. But I would like to congratulate Mr. Mohsin Naqvi, Chairman PCB, the entire management, Mr. Wahab Riaz, all the sponsors. I think we need more tournaments like these so talent can groom and we can, you know, further promote our players and have a great talent pool for international tournaments. So we need more tournaments like this Champions T20. And I think this tournament will go a long way in promoting the game of cricket in Pakistan. So once again, congratulations to the winners and my heartfelt commendations to the Pakistan Cricket Board. Thank you. Right, thank you very much. That was Mr. Ataullah Tharar, Federal Minister of Information and Broadcasting. We'll start off with the match official awards. I would request Mr. Ataullah Tharar to please step forward. He will present the medals to the match officials. First of all, the match referee, Mr. Ali Naqvi. The field umpire, Mr. Asif Yaqub. Mr. Rashid Riaz, the field umpire. Mr. Faisal Afridi, TV umpire. Mr. Zulfikar Jan, reserve umpire. Mr. Adnan Farooq, digital scorer. Mr. Fazil Azim, press scorer. Right, thank you very much, Mr. Ataullah. Right, now the match awards. The first of all, I would request Mr. Faisal Qureshi to please step forward. He will present the Barrier Town Player of the Match, Final Match Trophy and Cash Award of Rs 50,000 for his magnificent 100, Yasir Khan for Allied Bank Stallions. The player of the big moments. Let's have a few words, Yasir Khan. जब भी आप खेलते हैं बड़े रन्स करते हैं बहुत आसानी से 100 करते हैं आज अच्छा मौका ढूंढा आपने जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा
और जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं हमेशा छोटा नहीं सोचता कि 50-60 करना है, मैं हमेशा 100 का सोचता हूँ और मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ और आज अपने ऊपर बिलीव था कि फ़ाइनल अपनी टीम को जितवाना है और 100 करना है। मैंने रात को शोएब भाई से भी यही कहा था कि मैं कल 100 करूँगा, तो अल्लाह का शुक्र है 100 है। जब कैच छूटा था कोई दिल की धड़कन तेज हुई थी, उसके बाद क्या सोचा, कैसी डिटर्मिनेशन आई उसके बाद? जी जब कैच छूटा था तो लास्ट ईयर जब मैं नेशनल T20 में 100 किया तो उसमें भी एक कैच छूटा था, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ये भी सेम होगा, इंशाल्लाह 100 करूँगा। क्या खास बात रही आपकी बैटिंग की, अगर इन कंडीशंस की बात करेंगे, पिच आपको सूट करता है, बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं आप? जी विकेट काफ़ी अच्छा था और दूसरा ये मैं बताना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया, उन्होंने हमेशा कॉन्फिडेंस दिया, तो उसकी वजह से मुझे और कॉन्फिडेंस मिला और अल्लाह का शुक्र है उनको मैंने मायूस नहीं किया। इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, क्या कुछ सीख के जाएंगे शोएब मलिक के अंडर खेल के, हारिस के अंदर खेल के, क्या कुछ सीखा आपने? जी बहुत कुछ शोएब भाई से हमेशा सीखते रहते हैं, PSL 7 में भी साथ थे, काफ़ी कुछ सीखा था, तो अभी वनडे में भी थे, T20 में थे, तो अल्लाह का शुक्र है शोएब भाई के साथ खेल के भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। और हारिस जिस तरह हम सब यंगस्टर को सपोर्ट करता है, किसी को ये फील नहीं होने देता कि यार आप जो बाहर है उनको भी सेम रखते हैं, सबको सेम। अभी तो वो खुद भी यंगस्टर हैं। थैंक यू वेरी मच यासिर खान, ब्रिलियंट इनिंग। Right, on to the next award. I would request Mr. Junaid Zia to please step forward. He will present the Barrier Town Best Wicketkeeper of the Tournament Trophy and Cash Award of Rs 1 million to Mohammad Haris. 10 dismissals with 269 runs. Yeah, he's had a fantastic tournament. Brilliant. Right, on to the next one. I would request Mr. Nadeem Khan to please step forward. He will present the PCB Best Batter of the Tournament Trophy and Cash Award of 1 million rupees to Hussain Talat for his brilliant 319 runs. Yeah, lots of match-winning innings from Hussain Talat. He's been brilliant throughout the tournament, very consistent, Hussain Talat. Right, on to the next one now. I would request Mr. Wahab Riaz to please step forward. He will present the PCB Best Bowler of the Tournament and Cash Award of Rs 1 million with a trophy to Muhammad Ali. Allied Bank Stallions stealing the show with trophies. 22 wickets for Muhammad Ali. Muhammad Ali, just don't go too far, because I would request Mr. Ataullah Tarar to please step forward. He will present the Barrier Town Player of the Tournament Trophy and Cash Award of 1 million rupees to Muhammad Ali for the most impactful performances throughout the tournament. 22 wickets. He's been brilliant and an important part. Muhammad Ali, let's have a word, please. Deserve करते हैं आप? Satisfied हैं, content हैं जैसी performance रही throughout the tournament? I think इस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली मंजी भाई का, मंसूर अमजद का और शोएब भाई का स्पेशली, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया फॉर माई बेस्ट परफॉर्मेंसेस और थ्रू आउट द टूर्नामेंट मैं किसी भी मैच में रिलैक्स नहीं था. So credit all goes to the management and the coaches. क्या खास बात रही इस बार बॉलिंग की आपकी? हमने देखा पेस बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रहे थे आप, लेकिन जो वेरिएशन इस बार आप लेके आए वो कमाल की रही. देखिए लास्ट PSL में भी मैंने शायद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं, और वैसी ही बॉलिंग जो थी मैंने वहाँ पे भी की थी, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट था. और T20 जो है वो वेरिएशंस का गेम है, इसमें आपको वर्सेटाइल होना पड़ता है, छोटी बाउंड्रीज, पिचेस फ्लैट और जिस तरह के बैट्स हैं आजकल. अगर मैं आपसे पूछूं रेड बॉल क्रिकेट जितनी आपने खेली है उसने कितनी हेल्प की आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में? आई थिंक रेड बॉल मेरे लिए सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है, और उसके बाद जितने फॉर्मेट हैं, जब आप एक दफ़ा रेड बॉल खेल लेते हैं तो उसके बाद मेरे ख्याल में बाकी जो फॉर्मेट्स हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं. और कैसी रहेंगी सेलिब्रेशंस आज, क्या करेंगे? बहुत अच्छी रहेंगी. इस मौके पे मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा जो हमारे मैस्टर थे और जो हमारे डॉक्टर थे. आई थिंक जिस तरह उन्होंने मेरी केयर की और जिस तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा, इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट उन्हें भी जाता है. डेफिनेटली सब सुन रहे हैं और उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा दोनों को. थैंक यू वेरी मच.
Right, now, Mr. Faisal Qureshi, I would request him to please step forward. He will present the PCB runner-up trophy and cash award of 10 million rupees to the losing captain of UMT Markhors, Iftikhar Ahmed. Indeed, a beautiful trophy, no doubt. आज ऐसा लगा पहली बॉल सही दिन नहीं था आपका, जिस तरीके से हमने अप्रोच देखी बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी स्पेशली। हाँ, पहले तो मैं ऑस्ट्रेलियन की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थ्रू टूर्नामेंट इन लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। नहीं, ऐसे बात नहीं है। मेरे ख्याल में जब यासर का कैच छोटा तो वहाँ पे थोड़ा मोमेंटम उनकी तरफ चला गया है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में थोड़ा उन लोगों ने 200 रन भी किए। थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप टॉप पे रहे, लेकिन यहाँ पे जब प्रेशर आया ऐसा लगा जैसे फील्डिंग में बहुत लैप्सेस देखे हमने, बॉल टांगों के दरमियान से भी जाता रहा फील्डर्स के, तो क्या प्रेशर ले गए थे? देखो, फाइनल मैच का हमेशा प्रेशर होता है, और उन लोगों ने, मैं फिर कहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन की क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उसको डिज़र्व करते थे कि वो जीते। चलें, नेगेटिव तो हो गए, पॉजिटिव क्या लेके जाएंगे इस टूर्नामेंट से? कई अच्छी परफॉर्मेंस भी देखी हमने आपकी टीम से। देखो, पॉजिटिव ये है कि मोहम्मद जो आकिफ बॉलिंग कर रहा है, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग कर रहा है। मोहम्मद साद हमारे टीम से है, नाफे है, तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव साइन है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग टूर्नामेंट्स, वी विल सी यू सून। थैंक यू सर, थैंक यू। Right now, the big award. Mr. Ataullah Tariq to please step forward. He will present the Barrier Town Champions Cash Award of 15 million rupees. And at the moment, it's just the 15 million rupees to Mohammad Haris, the captain of Allied Bank Stallions. That is a fantastic Haris. Trophy बाद में देते हैं आपको. पहले बात कर लेते हैं. स्माइल हमेशा रखते हैं आप, और आज तो टीम की परफॉर्मेंस तो देखे और अच्छी हो गई स्माइल। बिल्कुल स्माइल होनी चाहिए, और जिस तरह का मैच था तो उसके बाद स्माइल ही बनती थी। क्या सोचा था आपने? टॉस जीत के पहले बैटिंग की, एक सरप्राइज दिया आपने उनको, उसके बाद जिस तरीके से आप अटैक किया, क्या प्लान लेके गए थे अंदर? नहीं, हम क्लियर माइंड के साथ आए थे, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेंथ है तो हमने यही कहा था कि हम पहले बैटिंग करेंगे, और विकेट भी आज बहुत अच्छा था, तो हमने अपने स्ट्रेंथ पे गया कि अगर हम यहाँ रन स्कोर बोर्ड पर डालते हैं तो फिर उनके लिए प्रेशर होगा, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह यासर के लिए 200 किए तो फिर वो चेस करना मुश्किल होता। आप सोच रहे थे कि एक यंगस्टर यासर खान स्टेप अप करेगा बड़े मैच में और इस तरह की इनिंग खेलेगा? बिल्कुल सोच रहे थे, क्योंकि हम बार बार उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे और हमें उन पर ट्रस्ट था, तो इसलिए उसने डिलीवर किया। क्योंकि पिछले 5-6 मैचों से वो इतना वो नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें उस पर बिलीव था एज अ टीम। शोएब भाई ने उस पर ट्रस्ट किया, हेड कोच मैंजी भाई ने उस पर ट्रस्ट किया कि यार एज अ टीम हमें ये चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने परफॉर्म किया। और आपकी अगर अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, जो मेच्योरिटी इस बार आपने बैटिंग में दिखाई है, ये कहाँ से आई? एकदम से मेच्योरिटी, और कप्तानी में भी आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत मेच्योरिटी नजर आई हमें। वेल, बैटिंग का क्रेडिट तो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट को दूंगा, क्योंकि वहाँ मैं खेलो 5-6 मैचेस खेलो, उससे काफ़ी हेल्प मिली है, कि बैटिंग टेम्परामेंट आया थोड़ा। और रही बात कप्तानी की, तो शोएब भाई का स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आई थिंक 500-600 से ज़्यादा मैचेस खेले, तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो मेरे साथ अंदर शेयर कर रहे थे एज अ मेंटोर। वो चीज़ें जो बाहर से नहीं बता सकते थे, वो अंदर मेरे साथ रह के जो बताए, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ। ओवरऑल इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, क्या कुछ सीख के जाएंगे इस टूर्नामेंट से, और कैसा रहा टूर्नामेंट ओवरऑल एज अ टीम एंड एज द कैप्टन? ओवरऑल वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जितने भी लड़के थे उन्होंने सारे ने परफॉर्म किया। जिस तरह यंगस्टर मिले हमें, माँ सदाकत हो गया, शामिल हो गया, उबैद शाह, जमान खान, उस्मान तारिक जो छुपा हुआ रुस्तम है, लेकिन उन्होंने भी 15 आउट किए, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, तो काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल टीम। और जो गलतियाँ की इंशाल्लाह अभी कैंप पे लगना है, और फिर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जो भी आगे होगा तो इसके लिए तैयारी करेंगे और मज़ीद तैयारी के साथ आएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग सीजन. Haris, don't go anywhere, because Mr. Ataullah Tariq will hand you over a beautiful trophy. Barrier Town Champions Cup 2024 winning trophy to Haris, deserving champions Allied Bank Stallions. There's been a magnificent performance. Played like champions and deserved to be champions. Let the celebration begin. Thank you very much, Ali Yunus. Great scenes here
Nusan Talat completes his 100. This has been a terrific knock. Anthem over. That is a fantastic cover drive from Mars. Just back, putting back to ball. That brings up his 50. Wonderful inning. Oh, Shandar shot. It's sounding beautiful. That is the fastest 50 of the tournament from Pushdil Shah. 50 of 33 deliveries. A wonderful effort under pressure. 50 for Sabzada Farhan. Back-to-back 50s. 4 रन्स के लिए खेला और अपनी पहली 50 मुकम्मल की उन्होंने इस टूर्नामेंट में. Another 50 for Haider Ali. What a wonderful knock from this youngster. बेहद जोरदार अंदाज में 50 रन मुकम्मल किए कप्तान ने. Goes big, goes massive. That's 50 for Khaja Nafe. Watch out for this boy. Well played, Khaja Nafe. Well, the figure's gone up. Trap straight in front of the stump. In the air and on. That's the hat-trick. Abwak has got the hat-trick. Picked up straight out of the middle of the bag. Down the track, takes the charge. That will bring yet another 50 for Fakhar Zaman. With the angle picked up beautifully. And flat batted for 6. Oh, that's 100 for him. Oh, Khwaja Nafi, you missed out on such an important opportunity. एक बार फिर और ये बड़ी विकेट है. He's hit it straight to the fielder, who makes no mistake. And this is the winning moment. And Allied Bank Stallions are top the hoop. They have won the championship.